गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल है? ऑल गुड या ऑल गुड। अच्छा, ऐसा कीजिए धीरेन्द्र जी, संचित भाई आ चुके हैं और आई थिंक ऋतिका भी है हमारे साथ। तो उनको आप को होस्ट बनाओ। आई थिंक आई हैव अ ग्लिच नेटवर्क टुडे, सो आई विल जस्ट जॉइनिंग एज अ स्पीकर टुडे। ओके। Okay, fair, not an issue. So I've already invited Sanchit. Maybe I can have only two co-hosts. So once, uh, The speaker of the day, guest speaker of the day, and he was top result, right? Aditya. So I'll just message him. Till then, I think you can just go through this particular topic itself. ठीक है, ठीक है. Hi Sanchit. हाय सर, फाइनली मैं वही देख रहा था क्या ग्लिच आ रहा है यार। आज वापस से परेशान थोड़ी ना कर रहा है। Welcome to Twitter City. यस सर। So I think we have guest speaker for the day, Stock Wizard. Dhirenji, can you just invite him up? Uh, okay, stock, right? Stock is that right? Okay. यस So, uh, या इनवाइटेड हिम। so hi stock with that. Welcome to the Twitter space. आई थिंक हिज नेम इज आदित्य ना, राइट? ओके, so shall we begin with it or shall I wait for another minute as well? So I think we are good to go. First of But all, I topic just wanted to thank topic कहाँ Stock है? Wizard. टॉपिक I कहाँ think गया? हाँ टॉपिक। ये टॉपिक अपने आप गायब हो गया, 1 मिनट में वापस से डाल दूँ. नो, मैं डाल देता हूँ। I don't know why this thing happens, but you know. So hi stock wizard, hi Aditya, welcome to Spaces. आई थिंक लेट्स बिगिन विद आवर सेशन पार्ट। आई थिंक टॉपिक आ गया है। नहीं, टॉपिक आपको दिख रहा है पूरा क्लियर? ओके, गुड। सो लेट्स बिगिन विद आवर सेशन पार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू आवर रूम। आज हम डिस्कस आउट करने वाले हैं अ वेरी सिंपल बेसिक टॉपिक। मार्केट है थोड़ा ऊपर नीचे, उथल पुथल अच्छी खासी दे रहा है। हमें भी पता है कि 4-5 दिन से मार्केट में बहुत दलाल दी, आज जाके थोड़ा सा हल्की सी रिकवरी थी, बट वी डोंट नो व्हाट्स द थिंग। बट देयर इज वन थिंग दैट वी ऑल नीड टू डिस्कस आउट, कि बहुत कॉमन है ये टॉपिक वैसे भी, बट यस इट्स अ पॉइंट टू डिस्कस आउट, दैट्स इट, कि हमें एसआईपी स्टॉक्स में करनी चाहिए या म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड टू मेक श्योर
and that is what today we are discussing on. And with us, we have a guest as well. His name is Aditya. By his account, Twitter account channel is by Stock Wizard, as Mani had told me about him. And we have Dhiren sir. He is also a trader. And myself, Sanchit, I am into the wealth management industry. So these are the major profile of all four peoples are over here. But today we have bring out the guest as well, who is a trader and investor also, and by the name is Swiss Stock Wizard. So hi Aditya, are you there? Yeah, yeah. Hi. Hi. So did I have pronounced your name correctly? Is it Aditya? Na? Yeah, it's Aditya. Awesome. So is Stock Wizard is like market name, but yes, I know that you are really fond of the market as well, and I totally appreciate that fondness. But yes, I always prefer यार आपका नाम याद है तो हमें सब याद है. Actually, when I started using Twitter, there was some different identity of the people. So I tried to keep some specific names. So I tried this one, and now it's people know me as the name only Stock Wizard. Wow, that's awesome. So what's your take on today's topic as a part of it? Like, what do you prefer the most? Yeah, stock, SIP, or mutual funds? Then I'll go ahead with a lot of my questions as well. It depends on a risk appetite. It depends on your knowledge, what you are aware with the stocks, because the both had their own advantages and disadvantages. Like SIP is obviously the most safest option if you're not into the market much, if you don't have enough time to track the stocks, and you can't handle the volatility and all. So definitely there's an advantage in the mutual funds. If you go for the stock SIP, then you need to monitor the stocks regularly. You need to check your portfolio, not daily, but yeah, at least twice or thrice a month, or even uh, very frequently. अगर आपका रिस्क एपेटाइट नहीं है उतना, अगर आपको वोलेटिलिटी हैंडल करना नहीं है, आपको थोड़ा सेफ खेलना है, तो एडवांटेज होता है आपका म्यूचुअल फंड में. There's always some, but yeah, it's always more pain more gain. Stocks में आपको हाई रिटर्न्स मिलते हैं, आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिलती है, बट अगेन रिपीटिंग के उसमें आपको स्टडी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है. यू शुड हैव अ प्री प्लान के व्हेन आई एम प्लानिंग टू एंटर, आपको टारगेट क्या रखना है स्टॉक्स में, इफ यू आर होल्डिंग फॉर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म. So it depends a lot of studies if you are into stocks SIPs. But yeah, the safest option is always in the mutual funds. There's no doubt in that. That is interesting on that front part. So I think people are joining in here as well. But yes, let's go ahead with other one as well. Listen it out that the answer as well you pointed. Then Aditya, I'll come up with my questions on that one part as well. So I have a lot of questions. I think even audiences have a questions as well. So I request an audiences and the listener also. जो भी आपके questions है, do message money. आई थिंक मनी को आप मैसेज कर दीजिए सो दैट ही कैन रीड आउट. बिकॉज क्या है ट्विटर में ग्लिचेस अच्छे खासे. मैं मैसेज भी पढ़ने लग गया, आपको बुला लिया तो ग्लिचेस ने रूम बंद कर दिया ना, तो ना तो हम सुन पाएंगे ना आप सुन पाओगे और सारा खेल खत्म हो जाएगा. सो मार्केट की जैसे ये भी हमें धोखा दे सकता है कभी भी. सो इट्स ऑलवेज बेटर वी प्रिपेयर फॉर इट. सो दैट इज वाई मनी इज देयर. आप मनी को मैसेज कर दो, वो आपके मनी के रिलेटेड जो भी डाउट है SIP के रिगार्डिंग, तो वो हमें क्वेश्चन बता देगा एंड विल आंसर इट. आई थिंक आदित्य इज आल्सो देयर, तो ही विल आल्सो आंसर इट एज वेल, राइट? So Aditya, I think let's go Mm. ahead with another one of question is, since how long you been into market and what's the major mistake that you have learned out कि यार उस टाइम पे अगर मैं ये कर लेता तो आज ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता. Have you had that kind of गिला और शिकवा? I guess almost 90% of the successful traders who are in the markets, they have the same initial phase. They always occur some losses in the beginning, but it always depends that some are lucky that किसी का लॉस कम होता है और किसी का लॉस ज्यादा होता है, तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है उसमें. क्योंकि व्हाट वी ट्राई टू डू इन द बिगिनिंग दैट वी ट्राई टू लाइक अपने पास 50,000 या 1 लाख मान के चलो, कोई छोटा रिटेलर है, तो मिनिमम किसी के पास 10-20 हजार, किसी के पास 1 लाख है, तो वो क्या सोचता है कि they try to multiply that amount into 5 or 10 times within a week or even a month also. The same mentality I had when I had in the starting. Okay, I try to do intraday. At that time there was a huge margin available. The 20, 25 times, 30 times leverage was available at that times in FNOs.
So what I try to do that I put in the 50,000 and try to buy stock worth of 5 lakhs or 10 lakhs and try to make like 5k or 10k per day, but that wasn't working, and it always resulted in loss. I tried to enter the market like 2 or 3 times in the beginning, and it what I learned from my mistake that we should take it as a business. Like I have some family business background family also, so they works on turnovers. They have the capital amount invested, and they are looking for like 4 5% per month is a decent return for them. Whatever the amount they are keeping, they are making 4 5%, and they are good with it. And what a normal retailer think that he want to make 200% or 300% of the initial amount which he's putting in the market, and expecting that this money should be like 5 गुना 10 गुना कर लूँ मैं एक महीने में. तो थोड़ा सा ये चीज थोड़ा हर्डल करती है, और that results in loss. Or the second most important thing that I didn't use a SL that time. I wasn't aware of the concept of the stop loss is that much important. So it resulted me like 3 times I blowed up my account, and the fourth time when I entered in the market, I tried to focus on one thing, that I need to survive. That's the only motto I had in my when I entered the market fourth time. So I survived for like I traded regularly for 2 or 3 months. I learned enough. I started using Twitter. I started following few good handles. I started about learning through Google, YouTube, and all, and uh, things improved gradually. And now here I am. So yeah, it's a normal. It's a like common phase for 90% of the people who are successful in stock market. They all start on the same note. They all they all have losses. I don't trust that if anyone says that he's from the beginning of the journey until now he's only made profit. It's not possible. If he's claiming such things, then definitely he's a liar or he's a god. So yeah, this my whole journey was started this only. दैट इज इंटरेस्टिंग. तो आपने भी ठोकर खा के ही मतलब सीखा है एज अ ट्रेडिंग लाइफ में. आई थिंक धीरेन्द्र सर इज ऑल्सो कोई भी हो देयर. कोई भी हो, उसको लगना ही है वो वही सिखाता है. वी लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक्स ऑल्सो. If I have so many people around me in my trading community, they say that I occurred losses. So I say that it's part of the game. Up the starting में, like if you're going to like if you're going in school or college, or you wanna go for any education, you pay some fees upfront for gaining the knowledge, for gaining the course, whatever you are planning to study or achieve. So it's same like stock market. You pay something upfront, and then you get the knowledge, and then you like gain the experience. You learn from your mistakes, and then things improve. So this way, this journey always, like most of the people have this common journey. That is interesting as well. So Aditya, you have bring out a very good point of traders life. I think traders life is something which we have discussed last week also. Hmm. Yeah, not getting your voice. Am I audible? Yeah, I think Sanchit bhai, can you just rejoin? I think there's a glitch from your side. Yeah, Yeah, Dhiren, yeah. I, yeah, hello guys, am I audible? yeah, किसी Dhiren, का you आवाज are. नहीं आ रहा. I think there is no voice coming. I don't know. Aditya, am I audible? Yeah, yeah, I can hear your voice. Okay, perfect. Yeah, well, till then, I think we can take some of the questions. So, I just came from Dalhousie. There was a snowfall. Similarly, I think in the market right now, we are seeing a valuation The falling. red, the red snowfall we are going through right now. Okay. So, so the question is, people are just asking about the sector specific. That is, uh, what sectors we can do SIP in from now for this particular year, or maybe for the next 2 to 3 years. If you talk about the sectors, like uh, IT is the evergreen sector from the beginning, and still has a long way to go.
If you're looking for any safe sector, then it's the IT. Chemicals have been doing good for the past few years. So it's you can still go for the chemical. If you talk about cyclic, if you're looking for some high risk cyclic sectors, then we can go for like reality sector. We can go for textile sector. We can go for this ethanol theme, but these are not for long term. But you can go for some cyclic investment in these sectors also. But if you're looking for some safe sectors, you can go for IT. You can go for like health sectors has also been very good. Uh, Even commodities are doing very well for the past few years, and it's been consolidating for the past 8 or 10 months. So I'm expecting that again the commodities will be uh, actually what happens with commodities that they are very aggressive in nature. They can multiply the value by thrice or मतलब काफी तेज ग्रोथ होता है और काफी तेज फिर ये नीचे भी आता है, तो ये थोड़ा साइक्लिक में आता है, तो इसमें थोड़ा रिस्की होता है। तो कमोडिटी का भी मेरे को लगता है कि करेगा परफॉर्म, बट यू नीड सम व्हाट यू से healthy mindset to hold the commodity stocks. But if you're looking for some safe investment, go for chemicals. You can go for agriculture sector as well, fertilizer sector. You can go for uh, what you say healthcare sector also very good. Looking for if you're looking for some good investment for good medium to long term. साइक्लिक सेक्टर्स आर वेरी रिस्की बेट्स। उसमें थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा और आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा वेरिएशंस होते हैं। बट if you look for safe sector, then definitely go for the ITs. I really hope that people are actually taking note of that. So great answer, Aditya. So I just wanted to know from your side, like when you actually choose about any particular sector you're talking about in terms of ethanol or maybe the other growing sectors. So how Hmm. do you look up to any particular company? What key pointers you actually look up to? There's always if you're not into very much into fundamentals, like maybe बहुत कुछ किसी को कंपनी के बारे में ज़्यादा डिटेल स्टडी नहीं आता आपको। इन द स्टॉक मार्केट में 80-90% लोगों को ज़्यादा फंड टेक्निकल्स पहले लोग सीखते हैं, फंडामेंटल सीखते हैं, तो बहुत लोगों को फंडामेंटल नहीं आता है। तो ज़्यादा मैं तो अगर आप एक नॉर्मल कॉमन पीपल के इफ यू के पर्सपेक्टिव से पूछो मेरे से, तो मैं तो बस यही बोलूंगा कि कंपनी को आप देखो कि इफ द कंपनी इज ग्रोइंग और नॉट, what are the companies achieving the sales growth, what are the companies the PAT is increasing or not, the check the price to earning ratio, if it's undervalued, it's overvalued, and if you see if this company is planning for any capex plan in the future, or think कुछ factors, the most important is the what are the holdings of the company, how many shares are the promoters holding, how many shares the institutions are holding, if they are increasing their stake or not. These are some key points which you need to consider if you are looking for any investment in good companies. There should be like वो कहते हैं ना कि ग्रोथ आपका बिजनेस है, चाहे वो कंपनी हो चाहे आपका खुद का बिजनेस हो, अगर आपके बिजनेस में ईयरली ग्रोथ है, आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका सेल्स बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली कंपनी इज ग्रोइंग। Okay, Aditya, and also you have been a trader. So have you tried any stock specific SIP yet, or maybe a mutual fund SIP yet? I generally do some ETFs for like avoid some हाई रिस्क इन द पोर्टफोलियोज, क्योंकि ईटीएफ में मैं निफ्टीज वगैरह रखता हूँ, मेरे को थोड़ा नेस्डेक भी रखता हूँ मैं, मोतीलाल ओसवाल का आता है नेस्डेक 100 फंड, तो उसमें थोड़ा बहुत ईटीएफ डालता हूँ मैं, निफ्टीज बैंक निफ्टी 20। जब भी मार्केट में 10% या अराउंड उससे ज्यादा करेक्शन होता है, तो आई जनरली बाई सम लमसम अमाउंट, आई डोंट गो फॉर एसआईपीज। स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड, इफ यू टॉक अबाउट हाउ आई एंटर्ड इन द स्टॉक मार्केट, I started with a mutual fund only. I learned about mutual fund. I know that we can grow some money, we can create very good wealth in the mutual funds. So I started with the mutual fund, and then धीरे धीरे फिर मेरे को स्टॉक के बारे में फिर मेरे को पता लगा। But when you are into full time trading, you don't go for SIPs and all. But I do some ETF buying whenever there is a good correction in the market. Like अभी Nasdaq में लगभग 14-15% का ड्रॉप आया है अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर, तो आई बॉट सम ETFs इन द Nasdaq 100 फंड
वी हैव सम गुड फंड लाइक मोतीलाल ओसवाल का है आपका ग्लोबल फंड में, और निफ्टी में भी करेक्शन आता है जब भी, तो मैं थोड़ा बहुत ईटीएफ वगैरह बाई कर लेता हूँ. So but this suits me because I'm always on the screen. I'm always like I always look for what the market is been doing, so it works for me. But people who are not into that much into market, they can do some SIPs as well, not an issue. Of course, great हाँ. pointers there. I think Yeah, whenever there's a good correction, you can go for some ETFs. The and then the एक चाहे वो बोलता है कि एक ये मार्केट है उसको ऊपर ही जाना है, तो वो पैसे आपके थोड़े सेफ रहते हैं. वो कभी जीरो नहीं होएगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट है, वो बढ़ेगा भले आपको थोड़ा रिटर्न 15%, निफ्टी का एवरेज 15% CAGR के आसपास है. बट नेस्डेक का अगर आप उठा के देखो पिछले 10 साल का, तो एवरेज CAGR अराउंड 25-30% का है. तो इवन इफ आई एम गेटिंग 15-20%, it's more than enough. Not expecting that if the Nasdaq has given returns of 25-30% annual, if you talk about the last decade, and if you talk about the coming decade, even if I'm getting 15% or 20%, it's more than enough. I'm making like 7 to 8 times of my capital in next 10 years, so it's more than enough for me. oh, lovely to know about that. I think I really love the point actually you made about Nifty. अगर Nifty हो या person हो, जाना हाँ, normal. उसको ऊपर ही है. स्टॉक मार्केट में क्रैश आता है, अभी मार्च में ही 14 से 7 हजार आ गया, फिर 7 से 18 हो गया, तो उसको ऊपर ही जाना है. तो मैं जब भी करेक्शन होता है तो अपना बेस्ट होता है. इफ यू आर इनटू द मार्केट, इफ यू आर इनटू ऑन द स्क्रीन, देन यू कैन ऑलवेज गो फॉर सम लमसम बाइंग. इफ यू आर नॉट इनटू that much of screen type guys, then you can go for some SIPs. And it's always the market, or even if you आप रहो चाहे ना रहो आप, बट ही मार्केट तो ऊपर ही जाना है. Lovely, अब So मैं it's always safe. It's always safe to invest in the ETFs. मैं बोल सकता हूँ. हाँ. हाँ, सबसे पहले तो आपको थैंक्स बोल रहा हूँ कि आपने इस तरह इतना बहुत अच्छा स्पेस क्रिएट करने के लिए, और रिटेल इन्वेस्टर को एक अवेयरनेस जो फैलाया आपने, तो आपको स्पेशली थैंक्स. और कुछ 5 पॉइंट मैं चाहूंगा कि डिस्कस करूं आप लोगों को. जस्ट 1 मिनट का टाइम लूंगा, आपको बताना चाहूंगा, जिससे रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अगर वो उसको फॉलो करेंगे हमेशा. तो हम्म. पहला पॉइंट ये है कि जब भी मार्केट करेक्ट होता है और जब भी अप जाता है, तो आप हम्म. अपने जो भी पोर्टफोलियो में जो भी स्टॉक रखे हैं, तो आपको चेक करना है कि वो भी उस निफ्टी के साथ आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है. और 2-3 चीजें जो बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि आप कोई भी स्टॉक को परचेज कर लेते हैं कि अभी करेक्शन हुआ है, अभी हम बाय कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है. आपको हर एक क्वार्टर के रिजल्ट देखने होते हैं. अगर उसने वाई ऑन वाई बेसिस पे अच्छा किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छा किया है, एफआईएस की एंट्री हुई है या नहीं हुई है, या फिर उसमें प्रमोटर ने इंक्रीज किया है स्टेक या डिक्रीज किया है. बहुत सारे लोग ऐसे देखते हैं कि प्रमोटर डिक्रीज करते जा रहे हैं और पब्लिक लेते जा रही है, फिर भी पब्लिक परचेज करते रही, तो उसमें देखना चाहिए कि प्रमोटर हमें किस तरह से है. और तीसरी चीज है गुड टाइम एंट्री. ये बहुत बड़ा चीज है. आई थिंक अगर जिसको ये समझ में आ गया कि कब हमें एंट्री लेना है, ऐसे भागते हुए ट्रेन को कभी मत पकड़िए. बहुत सारे लोग आज कल मार्केट गिरा था तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि ये लाल Take हो गया, ये example. लाल. Take example of Naukri. It has fallen around like what 40%, I guess, from the highs. अ, तो जो जिन्होंने बाई किया है 7 हजार या 7,500 से वापस आया नीचे नौकरी, मुझे लगता है अराउंड 4500 पे आ चुका है. बट इट्स अ वेरी हाँ. सॉलिड फंडामेंटल कंपनी. बट वही पंगा है कि जिसने इतना ऊपर बाई किया है वो तो फंस गया. तो तो वही होता है कि एंट्री एग्जिट, अब जिसने 3,000-4,000 पे लिया था, अगर उसने भी बुक नहीं किया, अगर 7.5 या 8 पे, नॉट एग्जैक्टली हाँ. रिमेम्बर व्हाट एग्जैक्ट हाइट मेड, बट जिसने एग्जिट नहीं किया वो भी फंस गया. बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द, इफ यू टॉक अबाउट रिस्क एपेटाइट, long term investing is not everyone's cup of tea. Like what we are going through the market right now, even the highly good fundamental stocks have been corrected like 30 or 40%. If you talk about the global market, Apple and Google and Amazon, Netflix, they're all down by like 30-40%. So it's not easy to be into investment. But if you have some good appetite, if you are holding for very very long term, so you can go for that. But also it's always important to
know when to enter and when to exit the stock. If you know this thing, then only long term investment is for you. But if you're not aware of this thing, then definitely you're gonna gonna be very difficult for you the investing game. तो मैंने वही बोल रहा था कि जितने भी आप अच्छे तरीके से एंट्री लेते हैं और उसी समय से आप उसी हिसाब से उसको कंपनी को रिव्यू करते रहिए। अगर कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो आप वहां से एग्जिट हुए। जस्ट आपने जोमेटो को देखा, पेटीएम में भी बहुत सारे लोगों ने जब नीचे आया था तो फिर से बाय कर लिया था कि फिर से लेना हमारा। ये लेने की जरूरत क्या है ये सब कंपनीज को? जो कंपनी घाटे में चल रही है, जो कंपनी आज तक मुनाफे में नहीं आई, हाँ उसमें हाँ बिल्कुल। कौन सी जादू की छड़ी घूमने वाली है कि वो मुनाफे में आ जाएगी? तो इसको तो मैं कभी बोलता भी नहीं किसी को कि भाई लो इसको। ये वी हैव स्टॉक मार्केट, वी हैव thousands of company listed. Why going for such एक cheap companies? एक Go for some. एग्जांपल देना चाहूंगा। अभी शारदा क्रोपो केमिकल का मैंने रिजल्ट आया था, आई थिंक 21 को आया था। तो मैंने उसके हम्म, क्वार्टर 3 का रिजल्ट देखे, क्वार्टर 2, और मैंने उसी टाइम उसमें एंट्री लिया। और इससे पहले मैं उसको ट्रैक कर रहा था, वो भागे जा रहा था लेकिन मैं उसको ले नहीं रहा था। लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि क्वार्टर अच्छा है तो ये कंपनी आगे अच्छा करेगी, तो अभी 2 दिन में इतने गिरे हुए मार्केट में भी उसने 35% तक जंप किया है। और आने वाले समय में भी आप चेक करेंगे कि मतलब बहुत अच्छा करे। तो इस तरह के क्वालिटी स्टॉक को ढूंढिए, खुद से रिसर्च कीजिए, बीएससी एनएससी के साइट पे जाइए। वहां पे सारे चीज डाले रहते हैं, आप लोग चेक नहीं करते हैं। जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं बीएससी के साइट को विजिट नहीं करते। वहां पे देखिए अनाउंसमेंट क्या हुआ है, किस कंपनी में क्या चल रहा है। आप वहां पे जा करके अपने पोर्टफोलियो को, सारे स्टॉक को रिव्यू करते रहिए और चेक कीजिए, समय से पहले चेक करके, और सही टाइम पे एंट्री लीजिए और सही टाइम पे एग्जिट हुई। मेरा कंप्लीट हो गया, थैंक यू। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म, आप जैसे आपने बोला आईटी मतलब फॉरएवर है, बट इसमें क्या है, जैसे एक लार्ज कैप आईटी हो गया, एक मिड कैप हो गया, एक स्मॉल कैप हो गया, तो हम्म. हम लार्ज कैप के साथ स्टिक करें या मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ पोर्शन डालें? If you talk about investment, it's always about diversification. आपके पोर्टफोलियो में चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, if it's diversified then you always safe. Even if you talk about investment in the base of sector, अगर उसमें diversification है then you are safe. So अगर आपको आईटी भी रखना है तो आप अगर डाइवर्सिफाई रखते हो, थोड़ा पोर्शन लार्ज कैप में रख लो, थोड़ा पोर्शन मिड कैप में रख लो, थोड़ा स्मॉल कैप में रख लो, तो इट्स ऑलवेज बेटर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपका डाइवर्सिफिकेशन ही है जो आपको बचा के रखता है। क्योंकि अगर बड़ा करेक्शन आएगा तो फिर आपका लार्ज कैप थोड़ा बचा के रखेगा। अगर मिड कैप थोड़ा गिरेगा, स्मॉल कैप का हाल तो सभी देख रहे हैं आजकल कैसे गिर रहा है। बट तो सर इट्स रिटर्न ऑलवेज बेटर टू डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। रिटर्न रिटर्न के मामले में इन्फी और टीसीएस ने इतना नहीं दिया जितना माइंड। इट्स इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज अबाउट मोर पेन मोर गेन। जितना रिस्क लोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा। कम रिस्क लोगे, इस भर दो स्मॉल कैप 80%, फिर झटका सहने के तैयार रहना। पोर्टफोलियो डाउन मारेगा जब 30% 40% दिखेगा, तो फिर वो झटका सबके बस की बर्दाश्त करने का नहीं होता ना। जो तो उतना ही लगाओ जितना बर्दाश्त कर सको। स्टॉक मार्केट में कहावत है कि मैं कहता हूँ रिस्क औकात अनुसार। अपने को अपना पता होना चाहिए कितने लेवल का रिस्क लेना होता है उसमें। तो देख लो। थैंक यू सर, थैंक यू। या Hello, Adit sir. हाँ, Sir, I am stuck in Prakash Industries and Hindustan Copper. Sir, please suggest what to do.
they are consolidating for the past few months. Twitter glitches today on that front part. तभी मैं इतना शांत हो गया अचानक से. That's not an issue over that point. I think let's bring on to the topics part. होस्ट में ज्यादा glitches होता है. I think host को हम लोगों के host जो है धीरेन्द्र sir is also one of the traders as well in this market. So उनको जनरली मैं भी क्वेश्चन आंसर्स करता हूँ. I'll generally host out all these things. पर क्या करें आज ट्विटर के glitches उठा के नीचे फेंक देता है. चलो लेट्स ब्रिंग ऑन टू द टॉपिक पार्ट. आई थिंक कोई अपना स्टॉक भी डिस्कस आउट कर गया. मैं सबके टॉपिक कर रहा हूँ उसको रुक जाओ भाई. So guys, let's come on. I think let me reset the room part as well. So guys, we are discussing about SIP and stocks or mutual funds. What do we prefer out? So when it comes to trading, we know we just buy on a day. आज खरीदा 2 बेच दिया 3 दिन बाद बेच दिया. That's called a trading we are doing. But when it comes to investment, that is an important point. हम investments क्यों करते हैं? That's a basic thing we all need to understand out. I think आदित्य भी वही कह रहा था कि हम स्टॉक्स को अगर नहीं समझ पाते वी कैन गो फॉर अ म्यूचुअल फंड जहाँ पे प्रोफेशनल आपको पूरा मैनेज आउट करे. अगर आप स्टॉक्स को समझते हो सर यू कैन स्टार्ट एन SIP इन स्टॉक एज वेल. सो SIP का मतलब क्या रहता है? इट्स जस्ट लाइक यू आर डूइंग अ रिकरिंग FD और अ डिपॉजिट. तो जिस तरीके से बैंक में आपका मंथली पैसे जाता रहता है सिमिलरली SIP भी वैसे काम करती है. तो मोस्ट पीपल जनरली मेरे पास एक क्वेश्चन लेके जनरली आते ही है कि सर म्यूचुअल फंड और एक SIP, मैं SIP करूँ या म्यूचुअल फंड करूँ? मैंने कहा SIP का फीचर होता है, म्यूचुअल फंड वो फीचर प्रोवाइड करवाता है. सो इट्स अ बेसिक concept which people generally had a mistake of. So Aditya, I think you also deal with such investors as well. So have they ever said these things to you or not? What, SIP or mutual fund? हाँ सर मुझे SIP भी करनी है मुझे म्यूचुअल फंड भी करना है. दोनों it's like same thing. There's not much difference. We do mutual fund. All the way to invest in mutual fund is through SIP only. SIP or lump sum. There are only two ways in which we can invest in mutual funds. The one is SIP and one is lump sum. They both are same. Yes. So mutual funds is itself a product and SIP is a feature of the facility provided by mutual fund company, which allows you to do a monthly SIP kind of monthly investments. I guess our Twitter followers are very much aware about these things. That's why the question comes out. ना सर SIP कर लो mutual fund कर लो. That's सर how एक छोटा the सा और basic क्वेश्चन है. हाँ एक जी छोटा सा परमिंदर जी क्वेश्चन है. प्लीज. सर जैसे हम SIP कर रहे हैं, ठीक है, अब हमें लगा जैसे कोरोना जैसा डिप आया तो हम लमसम उसमें 50,000 या 70,000 डाल के उसको NAV में मतलब और कर सकते हैं ऐसे, मतलब वो बेटर आइडिया है कि कभी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. आपको अगर वो सही आइडिया है. always it's a good idea. Yeah, why not? It's a good idea. You will get better returns if for the long term. Yeah, even I also do that. Whenever the market corrects, I buy some index funds. Generally, I don't go for SIPs, but I go for the lump sum. So whenever the market corrects, the global market corrects or the Indian market corrects, I always buy some amount. It's always good. Even it gives good return in the short term as well. कोई तभी मैं पूछ रहा हूँ, मतलब उसमें कोई लिमिट होती है? जैसे स्टॉक गिरता है 10% गिर गया 15% गिर गया तो अपन बाई करते हैं, फिर ऊपर जाएगा 10-15%, फिर तुम्हारा प्रॉफिट ही होगा. वैसे इंडेक्स भी है, जैसे निफ्टी गिरा था मार्च में 50%. इफ यू हैड इन्वेस्टेड लाइक 1 lakh, you would have got around 50% returns. और इवन द निफ्टी हैज what डबल या ट्रिपल हो गया, 18,000 पर पहुंच गया. तो आपको कितने टाइम में कितना रिटर्न मिल गया, यू कैन कैलकुलेट. It's always better to go lump sum when the market corrects. It's good. It's a good idea. Okay, thank you. I think that's a wonderful point as well. Whenever the market crash म्यूचुअल फंड में भी आप एडिशनल टॉप अप थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर एडिशनल, सकते हाँ, हो. सरप्लस. टॉप अप आप कर सकते हो. वन थिंग आई विल ऑलवेज से कि चाहे SIP हो, म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक मार्केट कुछ भी हो, कोई भी चाहे आप ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप इन्वेस्टर हो, चाहे आप इंट्रा ट्रेडर हो, कुछ भी हो, आपको पता होना चाहिए वॉट एवर यू आर पुटिंग इन द स्टॉक मार्केट, इट शुड बी योर डिस्पोजेबल अमाउंट. यू शुडंट बी वरीड के जैसे अभी मार्केट करेक्ट हो रहा है तो यू शुडंट बी वरीड के मेरा पैसे को क्या होगा. मतलब you should be having good sleep at the night. So this would be the funda, whether you are investing or you are in trading or you are doing SIP or you are doing lump sum. It always matters if you're getting good sleep at night. So always keep disposable amount in the market so that कोई भी करेक्शन कितना भी हो आप मस्त बिंदास रहो कि कोई टेंशन ना हो कि कल क्या होगा.
This should always be considered. ये नहीं कि अपना सारा का सारा पैसा उठा के इमरजेंसी फंड भी डाल दिया मार्केट में. This shouldn't be the habit. Don't think of becoming Ambani overnight. It takes years to become a Buffett or become Jhunjhunwala. बहुत टाइम लगता है बॉस. तो थोड़ा टाइम दो. That is the most important part if you are doing an investment or into stock market. No, that's totally true. Risk management भी अपनी जगह है. And when you said about the stocks trading partner, I think Dhiren sir is also. Dhiren sir, you there? Maybe if you talk about me, I never put my all of the 100% amount in the stock market. I always keep around 25%, 30%, maximum 40%. Even if I'm very much confident, I don't invest beyond 50% of my free amount. So it's always I always keep some amount free cash. Always keep some free cash. Or you can look for some alter investment as well. You can invest in gold. You can invest in ETF. You can invest in land as well. So there are different types of investment opportunities available. So why put all your money where the wise man said they never put all your eggs in one basket. So keep your investment diversified. Hmm. That's totally true. That's totally true, Aditya. Even we have a Dhiren sir also. Dhiren sir, you are there. I was just speaking and the product glitches comes on. So Dhiren sir, you being a trader, you being live trading as your life as well. आपकी daily life trading से ही चलती है. So Aditya, you might not be knowing very well, but Dhiren sir is one of the very brilliant traders and he's in the industry from the last 30 years as well. And I'm always learn from these things as well. So Dhiren sir, Oh, great. you been to last 30 years who are into stock market as well. सो आपके पास ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आया व्हेन यू थिंक अबाउट यार ऐसी कोई वो होती है ना मैं गिले शिकवे वाली फीलिंग आती है कि यार काश इसमें मैं स्टॉक की एसआईपी कर लेता सो आई विल बी हैव मेकिंग मोर मनी देन आई जस्ट डू इट इन ट्रेडिंग एज वेल एंड So, Aditya this question is to you very as well but interesting. later on after the answer. Yeah. So I will keep it brief. Okay. You guys can hear me, right? I'll keep it brief. So during, I think I was one of the in my, before I became a full-time trader, and before I was leading a corporate life, so in 2007 I had started a SIP and I had started a decent size SIP. जब 2007 में, I think 99.9% of the people were not aware of the word SIP. It was just introduced 2 years back. So that is the time when I started an SIP of 10,000 rupees a month because money was never the issue, and I had done it in 4 different schemes. And to so the thing is, by 2011, though I had seen the downside of 2008, 2009, 2010 was fairly decent, and 2011 we slowly started coming up. So by then I was very intrigued on stocks, so I said I will stop SIP, I will do my own fundamental thing, and I will do my own studies and everything. And I sold my SIPs at around 15-18% profit because SIP था, तो नीचे में मेरे को ज्यादा units मिले, तो I made a decent profit and I came out. But I got a shock of my life when I saw those NAVs in 2017, and 2017, after 10 years, so I would have paid 12 lakh rupees in 10 years, 10,000 rupees a month, but that 12 lakhs had become more than 47 lakhs. And then I just looked back and I saw, okay, have I really made additional 47 lakhs? And the answer was no. So I really realized that, SIP or mutual funds work brilliantly over a 8 to 10 year period. That is where the real compounding effect comes in. So I think that was a shock of my this thing, but I still do because I am into technicals and investing. I do stock SIP as well as I do certain mutual fund SIPs. Okay, so now they go without saying, so they go out of my profits of every month. Whatever happens, but that is long term. I don't look at the prices. I was not bothered when the COVID came in and the markets crashed, or nothing bothered me at that point of time. So I think in fact it was an opportunity. I added more money lump sum, during that like during the first circuit, etc. So I believe that these are great opportunities if you're really looking long term. And I think mutual funds, you can't go wrong if your view is more than 8 years. So even if you've caught somewhere on a high end of the curve, but because of the SIP, the way the fundamentally it is structured, one will always end up making some decent sized money over a period of time. Yeah, obviously. That's totally true. That's totally true. I think that's even a fact of point as well. Aditya, have you ever been come into the similar situation as well? I don't have that much of experience. I started in the trading stock market 5 years ago.
So initially I started doing some mutual funds, SIPs as well. But when I'm into full time trading, I generally I need some money, so I just uh, what you say, I pulled off my money from mutual funds. And uh, I don't go for SIPs because if you're a trader, you don't have you have the screen. You know what your skills are. So generally, I don't go for SIPs. But definitely, I put some lump sum amount into investment for long term. It's always good to, like, what do some people say that if I'm not married yet, but few people say that if you're married and you are having you have two child, so keep equity as a third child. लाइक दो बच्चे बड़े होंगे तो उनका खर्चा होगा, वो तीसरा बच्चा जब 20 साल का होएगा तो वो आपको सारा खर्चा आपका वो निकाल के देगा. तो पीपल से दैट कीप इक्विटी थर्ड चाइल्ड. तो लॉन्ग टर्म में इट्स ऑलवेज गुड. जितना आपको लंबा कर सकते हो आपको इन्वेस्टमेंट, चाहे SIP हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक SIP हो, वट एवर यू डूइंग, the more you are holding the funds, you are going to be, it's always going to be better in the long term. That is interesting over that front point as well. I सर think, Mani, have you invited Avinash sir as well? Yeah, I've invited. I'll just request him again. Yeah, he's one of the very present Yeah. personalities, and I always listen to the TV as well. Yes, Parminder, you were saying something, then I'll get मैं into the सर next सर आदित्य सर को कह रहा था कि वो आपका जो इक्विटी चाइल्ड है, जब भी मार्केट गिरती है उनके नाम बता दिया करो थोड़े बहुत. अरे बहुत ठीक है. सारे हैं यार, ट्वीट नहीं सर, बहुत आप ना हैं. मार्केट लीडर है हाँ, इतने सारे आपको, रिलायंस, डाबर, पीडीलाइट है अभी आपका. आपने जैसे अभी एक विप्रो रिजल्ट इस क्वार्टर का खराब आया है. हाँ, विप्रो भी है, लॉन्ग टर्म के लिए मस्त है. इन्फोसिस भी अब आ रहा है धीरे धीरे, TCS को टक्कर दे रहा है. नहीं, अभी तो आपने कल परसों डाला था विप्रो, उसके बाद विप्रो तो आपने मैंने कोई बाई किया, वो मेरा ठीक है. लॉन्ग टर्म पिक है. मैं विप्रो हर फॉल में एकोमुलेट करता हूँ. ठीक ठीक है. I have to cut in between Parminder as well. सॉरी. Parminder, ओके. okay. Aditya, being very much very clear cut on this point as well. I have to interrupt हम्म. in between everyone as well. So, guys, here we are not discussing any stock specific part. If anyone is giving any stock, it's only their personal opinion and views part. Don't take any of these हम्म. advice as well. It's everyone is a personal views. Okay, Parminder, if you are following it, please consult with your advisor. Do your own research part. Okay, so if you are asking a particular stock over here, then it might becomes a tips part, and we are mostly running this room the clear purpose for learning purpose. So यहाँ पे जितने लोग आते हैं उन सबको हम मेक श्योर करते हैं कुछ ना कुछ वो सीख के जाए, क्योंकि 1-2 घंटा मिलता है उनके लिए भी और अपने लिए भी. सो वील मेक श्योर कि उनके लिए लर्निंग हो जो हमने एक्सपीरियंस आउट किया है हमारी पर्सनल लाइफ से, हमारी मार्केट की लर्निंग से. सो आई थिंक परमिंदर आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे, नॉट बिल्कुल बीइंग सर, अ बिल्कुल. वेरी स्पेसिफिक पॉइंट क्योंकि whenever it comes to our stock tips you have already a lot of options. आप खुद भी रिसर्च आउट करिए. आई थिंक यू आर बेटर एबल टू मेक अ वाइज. सो विद दिस थिंग लेट्स गो हेड विद पार्ट. आई थिंक हम लोग अपने टॉपिक पे भटक जाते हैं कई बार, सिर्फ बातें आती है तो वी कैन गो हेड एनीवेयर एज वेल. सो विद दिस थिंग गाइस, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. हम स्टॉक्स की SIP कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड की SIP के लिए हमें पता है. सो इन इंडिया I think most of the when we talk about the facts and figures as well, so there are 9,500 plus stocks in the market and 6,000 plus more than mutual fund schemes as well. So जब मैं कहता हूँ इतने सारे 10,000 से dozens of thousands, Sanchit bhai, I think we have lost you again. Yeah, I think we can take a Can I couple of ask? questions from the audience. Yeah, Maverick, I think we can go ahead now. Yeah, we can take some questions. Okay, I have a quick question. So आजकल जो ये buy hold for my buy now hold forever वाला, I think that thing has gone. Given that there is so much disruption हर field में, so ये जो होता है third child as equity, I mean, how do we manage them? I mean, we can't buy one stock and keep it like कि अब ये Pidilite है, सालों साल I बढ़ता told, I रहेगा. told, I told earlier also. If you are into stocks, if you are able to track the stocks regularly, if you are able to track the fundamentals of the company, so you can do the stock SIPs. But if you're not into that much of a screen type of person, you can go for a mutual fund. There's a much easier way, and it's also it has an added advantage because there are some people who are managing your money. They are getting paid crores of rupees per month. The fund managers. So पैसा उनको दो ना, वो मैनेज करेंगे आपका पैसा, को कोई टेंशन लेना है.
Okay. अगर आपको नहीं पता आपको कौन से स्टॉक लेने हैं, आपको कौन सा SIP करना है, तो गो फॉर सम गुड म्यूचुअल फंड्स। वहां बैठे हुए मैनेजर, वो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको लॉन्ग टर्म में आप जितना लंबा करोगे कोई भी म्यूचुअल फंड हो, बट ऑल्सो कि आप आंख बंद के किसी म्यूचुअल फंड में नहीं जा सकते। यू शुड ऑलवेज डू सम स्टडी के किसने अच्छा परफॉर्म किया है पिछले, इवन इन दिस, इफ यू व्हाट करेक्शन वी आर गोइंग थ्रू, इसमें भी कौन सा किस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस, स्टिल दे आर गुड, डूइंग गुड। और पास रिटर्न में भी आपको कोई गारंटी नहीं होती कि दे विल परफॉर्म लाइक, किसने 5 साल पहले अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में, तो अगले 5 साल में देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। बट यू शुड स्टडी सम फ्यू म्यूचुअल फंड एज वेल, कि कुछ कंपेयर करो, कुछ आपको दिखे कि लार्ज कैप में करना है, मिड कैप में करना है, तो सारी डिटेल्स दी होती है म्यूचुअल फंड में, उनकी होल्डिंग्स क्या है। अगर आपको बहुत सारी डिटेल्स नहीं पता है, बाकी आप रैंकिंग दे सकते हो, किसकी अच्छी रैंकिंग है म्यूचुअल फंड में। कुछ अच्छे फंड हाउसेज है, जैसे मीरा एसेट का लार्ज कैप का फंड काफी अच्छा है उसका, तो मैं उसको ट्रैक करता हूँ। आपके SBI के हैं, एक्सिस के हैं, काफी सारे हैं। बट अगर आपको नहीं पता स्टॉक स्पेसिफिक, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। इट्स ऑलवेज गुड। Thank you. Sir, please. Hello. Yeah. Yeah, Venkatesh. Sir, it's me, Venkatesh, sir. Sir, about this, I had kept in a SBI balanced Magnum fund 4 years back. That is my first mutual fund where I had invested. It is now, I kept some good amount. It is about some 50 lakhs. It is now around 38 lakhs. But I'm very new about these investments and everything. But in that time, I don't know how to go with that. I had gone with a regular mode, which maybe of some agent has taken me to that, and I did at that time. It is good about it. Now I didn't move about it. I didn't change from that. I'm earning about some 13 to 14%, I think so. And that is my first investment 4 years back. And last year in the pandemic time, I had taken DSP small cap fund, sir, which is around some 8 months back, which is giving now 48%, I think so, returns. So I want to ask, sir, whenever if the returns are very good, means it is that I have to come back with the entire amount, or is there anything that I can pick that small amount, means the profit amount, It's as it's we it's use it? always it's always in your hands. It's always good to have some green in the pocket, either in the stocks or in the mutual fund. But if you are planning to hold for the longer times, then you can hold. They can keep them out. There's not an issue. But as I always say that it's always good to have some green in the pocket, whether if you are the stock is in profit, or either in your mutual funds are in profit. It's always good to book some green. Not an And issue. one But if you are planning for the long term, if your like time horizon is very long, 10 years, 15 years, you can keep. There's not an issue. It always give better returns in the longer time frame. yes, sir. In that, what That's I'm totally true. in that, what is the But doubt yeah, I'm when having is, sir, if we keep if you are having money in our side, in our bank, if you're getting some interest from there, if you don't take that interest amount, we used to get some compounding interest again back. Is there the same scenario in the mutual funds also? Because my profit It's is more. always it's always it's always a compound interest. Either in the banks, if you're getting FDs, if you're getting 6 to 7%, or if in the stock, if in the mutual fund, if you're getting 10 to 12%, it's always a compound interest you're getting. So That's it's what, sir. always good. Yeah, it's always good to hold for the long term. That will be Uh, like it will add in a huge amount. You can create good wealth in the long term. yes, sir. Why? Because from last 4 years, I'm standing in the same SBA Magnum fund. I'm little bit confused of that. Am I doing You any can wrong you thing? can you can you can even diversify the mutual fund as well. You don't need to put all your money in one mutual fund. There are plenty of mutual funds available in the market. You can study them. You can go for some other funds as well. You can diversify your 10 lakhs into 5 mutual funds, 10 lakh into 5 funds. Why you put all your money in one mutual funds? You That's can what, go sir. for you can go for diversification. That will be even better one. That will give you even better. That can handle volatility as well. That can even you can give you better returns as well. Better returns. So yeah, you can go for that. The point is the main thing, sir. From the 4 years I'm standing there, I'm getting a good amount, as I'm seeing. But what Just my wait. doubt is, as my profits are compounding, or only the same I'm getting it.
because everything, whatever returns you are getting, it's being compounded. compounding backward, the Yeah, work is yeah, going yeah, backward. Okay, then it is yeah. very happy for such like us. Instead of doing trading, I think mutual fund only supports because we don't know this language. Some people used to tell STP, some systematic, some more, I don't know, confused. Only SIP I learned it is a systematic investment plan. But some of my friends are telling, please try to do that STP or something mode. The what is the profit is there, you can make to some other change, like that they are telling me. Whatever you're planning to invest, always consult any good financial advisor before investing into any instrument, whether it's stock or it's mutual fund. You should always go for with some professional help, and then you can invest. You don't go for what your friends are saying. Yes, yes. Always go for a good financial advisor. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so Yeah, much, sir. That's what I'm feeling. That Okay, I man. will go along with that. yeah. I'm following you from Okay. last 1.5 month in your Telegram channel and everything. I think I may do better in the future along with you, sir. Thank you. Sure, man. Thanks. Thank you. Awesome. That's wonderful question, Venkatesh. I think Venkatesh, before I'll go ahead with you as well. Um, there is a one single thing I would like to say. As you said, you want to withdraw their money partner, so you can go with SWP. जैसे आपकी SIP में आप इन्वेस्ट करते हो, वैसे Mhm. SW से आप विड्रॉवल कर सकते हो अपने मंथली कैश फ्लो के लिए हिसाब से. सो दैट इज द थिंग. एंड व्हेन दे सेड STP ना, तो STP का मतलब होता है कि जैसे आप अपने सेविंग्स अकाउंट से आप इक्विटी में पैसा डालते हो रेगुलरली, आप रिकरिंग FD कराते हो, तो एसटीपी का मतलब होता है सेम म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर आप एक स्कीम से दूसरी स्कीम के अंदर सिस्टमेटिकली ट्रांसफर कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर परसेंटेज, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन एज वेल. सो लेट्स कमिंग बैक टू द पॉइंट एज वेल. आई थिंक वेंकटेश जी का क्वेश्चन, आई थिंक आदित्य ने काफी अच्छा आंसर आउट भी कर दिया, बट वी हैव आवर स्पेशल गेस्ट एज वेल. आई थिंक अविनाश जी एज वेल बैक इट आउट. सो अविनाश सर, हाय, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर. यू एंड आई से गुड मॉर्निंग बिकॉज सेशन नया है, तो वी कॉल इट अ गुड मॉर्निंग इन अ वेरी हाई जोश. Yeah, I think nice discussion. I think a lot of people, I see that mutual funds में पैसा लगा रहे हैं. मैं मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि आई हैव नेवर इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड्स. आई हैव ऑलवेज इन्वेस्टेड इन डायरेक्ट इक्विटी. बट इक्विटी में अगर पैसा लगाना है, if you want to invest money in equity, then you need to be ready for the volatility in the markets. So market में, if you feel that you want to only make money, you don't want to take the pain on your side, then it's better that people put money in mutual funds. Because see, frankly, in mutual funds you don't get the benefit of bonus, you don't get the benefit of rights or buyback. तो ये सारे added incentives है अगर if you invest in the right stock and the right sector and invest for the next 5-10 years. आई हैव पर्सनली नेवर डन ट्रेडिंग, तो मैं ट्रेडिंग बहुत कम जानता हूँ और उसके बारे में मेरा कोई नेगेटिव या पॉजिटिव व्यू नहीं है, क्योंकि आई फील दैट बोथ ट्रेडिंग एंड फंडामेंटल बाइंग विल कंटिन्यू. बट if you really want to make money, I think there is a huge opportunity even as of now. I think there is no dearth of opportunity. Only thing I think one needs to have a very proper financial plan. Like भाई 5 साल 10 साल के लिए पैसा लगाने का ताकत है तो लगाओ. I mean, if you are looking at business channel, then taking a call कि भाई आज लेके कल बेचना है या 2 दिन में बेचना है या आधे घंटे में बेचना है, तो wealth can never get created. So mutual funds are definitely a good vehicle, but I said you should be careful because there are so many mutual funds, 6,000 schemes. So you need to take the help of some financial advisor if you really want to build a portfolio of mutual funds also based on your risk appetite, based on your risk reward, और आपका क्या time frame है. So I think I have always looked upon mutual funds for people who want to balance risk and who don't want to take high risk. So that is my definition. If you feel that mutual funds are there, are obviously there for your risk management, then I think you all can definitely try it. I think funds like HDFC, ICICI, Mira Asset, these are all very well managed funds. But the best part is if you are a young investor, अगर आप 20 साल के 25 साल के हो, so I would say that you must start putting your wealth. You should start building your wealth base first in equities, and then gradually move to mutual funds. So I think all of you can ask questions. I think so many people have possibly been waiting. So I think probably that would be a better way. So anyway, these were my thoughts on this subject. No, that's a wonderful thought, sir. एज वेल इसको भी बहुत अच्छा आपने क्लियर आउट व्यू पॉइंट भी दे दिया कि अगर हम स्टॉक SIP करते हैं तो इससे रिस्क आता है स्ट्रिक्ट, बिकॉज स्टॉक मार्केट में वी नो देयर आर मोर देन 10,000 स्टॉक्स राइट नाउ. म्यूचुअल फंड में 6,000 स्कीम्स है. अब जहाँ ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं वहाँ कंफ्यूजन आता ही आता है. दैट्स अ कॉमन मेथोडोलॉजी एज वेल, एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे यू हैव डिफाइन आउट कि जो भी यंगस्टर्स जनरली आते हैं जिनको आइडिया नहीं है, दे कैन ऑफर अ म्यूचुअल फंड
अब सिलेक्शन करना है तो ऑफ कोर्स देयर इज अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एंड आई थिंक गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स हैव ब्रिंग आउट सच stringent rules and regulations on that front part as well. तो सिर्फ एडवाइजरी ही करते हैं, एंड दे ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग अ फाइनेंशियल प्लान एज वेल. So I think that is a wonderful platform on that front part as well. And yes, sir, we are looking forward on Friday as well with you on a session. I know we have a session also with a guest also. So guys, I am even announcing advance also. So on Friday we are doing a session with Avinash sir as well, with some very interesting topic which I'll be sharing it soon with Avinash sir as well. I think Mani will be sharing it to you as well. But on today's topic front, let's coming back on that front point as well. So आज के टॉपिक का सिंपल सा पर्पस ये रहता है कि अगर हम SIP कर रहे हैं तो हम SIP स्टॉक्स में करें या म्यूचुअल फंड में करें. अगर हम म्यूचुअल फंड में करते हैं किस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए. तो आई थिंक अविनाश सर हैज क्लियरली मेड हिज पॉइंट है कि हमारा गोल, हमारी रिस्क प्रोफाइल और हमारा कैपिटल, ये तीन चीज हमें एक मेक श्योर डिसाइड आउट करनी चाहिए कि हमें किस पर्पस के हिसाब से इन्वेस्ट करें, हमारी रिस्क कैपिटल कितनी है और हमें कितनी कैपिटल उसमें लगाने की है. बिकॉज when you have a clear specific thing, then I think it's a better way to make an investment. But अविनाश सर ने जैसे क्लियरली कहा कि उन्होंने ट्रेडिंग कभी नहीं की, दे ऑलवेज डू एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज उनको इक्विटी समझ में आती है. He said a clear cut thing because he is an experience. जितना experience उनको है, उतनी तो हमारी age है. So it's just like the learning part we can have it out. So I think let's go ahead with the question part. So guys, if you have any question, now do one thing. Do message Money on the back channel part, back message as well. Otherwise छोटे के glitches उठा के आपको फेंक देंगे या मुझे फेंक देंगे ऊपर नीचे, तो उससे आप सभी परेशान हो जाओगे. और इफ यू आर ऑन द स्पीकर पैनल ऑल्सो, कि मुझे अब स्पीकर्स में नहीं दिख रहे क्योंकि ट्विटर के ग्लिचेस ने मुझे मिनिमाइज कर दिया. तो अगर आप में से कोई स्पीकर्स में है तो आप एक बार अनम्यूट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई थिंक आदित्य भी है, मनी, अविनाश सर भी है, धीरेन्द्र सर भी है. वी Hello. ऑल हैव टू आंसर. प्लीज गो अहेड once by one. Hello, Dhivan. Thank you. Thank you, Manigar, for allowing me to speak. Hello, Aditya. It was nice hearing you. मैं वही हूँ जिन्होंने कल आपके ट्वीट पे रिप्लाई किया था. मेरा एक जनरल क्वेश्चन है. Yeah, Pooja, go ahead. Hello. लगता है glitch हो गया. Yeah, voice is not coming. Yeah. Hello, Saurav sir is Yeah. also there. Hi. Thanks for inviting me. हाँ. See, जैसे अविनाश ने बोला, actually अविनाश was my, we are previously in one organization called Anagram, जो अभी Edelweiss हो गया. Yeah, He is yeah. very senior to me. So उन्होंने जो Yeah, Saurav, how are you? अरे fine, क्या खबर? अरे भाई बहुत दिन के बाद ही मिले. जारी कर दिया था मुझे. मैं बोल ही रही थी. स्पीकिंग एंड Okay. आई थॉट इट मतलब. Yeah, you can Yeah, ask a some question. glitch came, I हाँ. guess. Yeah. So what I suggest is that कि I have been doing the stock SIP. जो आज का टॉपिक है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके लिए मैंने ज्वाइन किया है. So I have limited point to make. See, as Avinash said कि first step जो है वो आप म्यूचुअल फंड से भी कर सकते हो या स्टॉक SIP से कर सकते हो. मैं 2014-15 से मैं स्टॉक SIP कर रहा हूँ. एंड आई चूज फ्यू कंपनीज जो अभी बहुत बड़ा हो गया. आई वाज इनिशियली इन्वेस्टेड इन टाइटन जब उसका 500 रुपया दाम था. आई स्टार्टेड विद दैट. देन बजाज फाइनेंस था मेरे पास एंड फ्यू अदर्स भी थे. उसमें एक दो में मैंने लॉस भी किया है. जैसे फॉर एग्जांपल एक अशोक लीलैंड कुड नॉट गिव मी रिटर्न. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि अगर आपको स्टॉक SIP करना है तो वो स्लाइटली रिस्की है. इन द सेंस आपको उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कंपनी आप फोर्सी करते हो कि नेक्स्ट 10 साल के बाद भी रहेगा या 15 साल के बाद भी रहेगा. ठीक है. जैसे आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो, देयर इज अ फंड मैनेजर हु टेक्स केयर ऑफ योर दिस थिंग डिसीजन. बट अगर डायरेक्टली आप स्टॉक SIP करते हो तो उसमें अच्छे कंपनी चूज कीजिए और उसमें स्टिक रहिए. जैसे मान लीजिए प्रेजेंटली जैसा है, मैं ICICI बैंक है, टाटा कंज्यूमर है, देन आई हैव टाटा पावर. these are the companies I am investing, okay, at this point of time. अगर मान लीजिए कि एग्जांपल देता हूँ कि इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन ICICI बैंक, आई स्टार्टेड फ्रॉम 500 रुपीज. लास्ट ईयर 2020 में फॉल आया था, वो 250 भी हो गया था, तभी भी मैंने इन्वेस्ट किया था और आज 800 हो गया था. इनफैक्ट टुडे वाज माय SIP डेट, स्टॉक SIP डेट 25th ऑफ द मंथ. आज भी मैंने बाई किया है. बट if you have the 6-7 years और 8-10 year विजन ना, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है सर. एंड द काइंड ऑफ रिटर्न मेरे को जो पर्सनली मिला है, माने इट इज एस्ट्रोनॉशिंग, माने फिनोमिनल रिटर्न मिला है.
माने यू कैन नॉट, जैसे अविनाश ने बोला इसमें आपको डिविडेंड ये सारे चीज आपको मिलते हैं, एंड यू हैव बीन एबल टू वॉच कि आपका बेसिकली आपके पोर्टफोलियो में आपका कंट्रोल है। म्यूचुअल फंड में आपका यू डोंट नो बियॉन्ड 10 कंपनीज जो म्यूचुअल फंड किस में पैसा डाल रहा है, देन यू हैव टू डू ए लॉट ऑफ स्टडी। जैसे मैंने बताया कि इनिशियली आई वाज स्टार्टेड विद टाइटन, बजाज फिनेंस, आई हैड अशोक लीलैंड जो परफॉर्म नहीं किया, एंड आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा नहीं अशोक लीलैंड परफॉर्म नहीं कर रहा है इन ए 2-3 years पर्सपेक्टिव, सो मैं उससे निकल गया एंड इन्वेस्ट इन समथिंग एल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर स्टॉक एसआईपी करना है तो इट इज गिविंग मच बेटर रिटर्न। आप उसी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो कंपनी यू फील कि आज से 15 साल के बाद भी रहने वाला है। फॉर एग्जांपल रिलायंस है या बजाज फिनांस है या टाइटन है या एशियन पेंट्स है, पीडीलाइट है, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, उसी में इन्वेस्ट कीजिए। थर्ड पॉइंट ऑफ टाइम उसमें स्लाइटली लॉन्ग टर्म विजन रख के चलिए। जैसे मैं आपको पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस देता हूँ, जैसे मैंने टाइटन में इन्वेस्ट किया था इन 2014 और 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया था एंड टाइटन फेल फ्रॉम 500 टू 250। आज भी मेरे को दिन याद है, डीमोनेटाइजेशन के दिन वो बिलो 300 था एंड दैट वाज माय स्टॉक एसआईपी डेट। तो उस टाइम पे ऐसा लगता था कि नहीं शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया है, ये गलत कंपनी में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा 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 लोगों को ऐसा लगने लगा कि लोग गोल्ड खरीदना बंद कर देंगे, माहौल ही ऐसा था। ओके, बट इट प्रूव मी मतलब वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन टू कंटिन्यू विद दैट, एंड वो मैं अभी भी कुछ दिन पहले तक मैं वो बाई कर रहा था। अभी नाउ आई हैव स्टॉप टेकिंग द fresh position in Titan or fresh buy in Titan, I have replaced with some other stocks. अगर स्टॉक एसआईपी करना है तो दिस इज माय मंत्रा और दिस इज माय एडवाइस, इसको स्टेप बाय स्टेप कीजिए एंड लेट मी टेल यू द रिटर्न्स आर फिनोमिनल, रिटर्न्स आर फिनोमिनल। दिस हैज बीन माय एक्सपीरियंस for last 6-7 years, so I thought I'll just share my experience. Yeah, now, so can I ask my question? I was Hello? like about to ask and I got thrown out of the space. Yeah, Pooja ji, go on. हाँ, मेरा ना एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है कि अगर आप बोलो तो एग्जांपल देके भी मैं समझा सकती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रीड एंड पेशेंस। मैं हिंदी में नहीं, मुझे पता है ग्रीड लालच होती है और पेशेंस सब्र होता है, लेकिन ग्रीड और पेशेंस का डिफरेंस स्टॉक मार्केट में कैसे समझते हो आप लोग? जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि मैंने 100 रुपए में कोई चीज खरीदी, उसके टारगेट आ रही है 120 है, 125, 130, ठीक है, जनता 120 पे भी निकल गई, 25 पे, मैं ये सोच के पेशेंस रख के बैठी हूँ कि नहीं मैं तो 130 पे ही एग्जिट करूंगी, बट मैंने देखा कि वो 125, 120, 21 से ही वो वापिस घूम लिया। तो वो डिफरेंस आप लोग कैसे करते हो? आप लोग इतने एक्सपर्ट हो, क्योंकि मेरे को ना इस चीज का कोई वैलिड वो नहीं मिल रहा है आंसर। चाहे हम इसको इंट्राडे में अप्लाई करें, चाहे हम इसको स्विंग ट्रेडिंग में अप्लाई करें, चाहे शॉर्ट टर्म में अप्लाई करें, ये कैसे अप्लाई करते हो आप लोग ग्रीड और पेशेंस का डिफरेंस, और Can I give कैसे an answer लगाते to this? Okay, I will just give you very briefly, Pooja ji. Okay, so I'll give you with today's example. Okay, so I had this one stock in my radar, which was Maruti Suzuki. Okay, and I could see कि ये कभी ना कभी ये 8800, 8900, 9000 प्लस भी जा सकता है. Okay, guys, this is not a recommendation. This is just an example. So please take it as one. Okay, and so मेरे रेडार में था. कल जब ये 2-3 दिन से मार्केट लगातार गिर रही थी, तो मेरे को सस्ता भी मिल रहा था. हावेवर सो उधर ग्रीड आता है, बट पेशेंस ये बोल रहा था कि फील्डिंग भरना पड़ सकता है. मुझे फील्डिंग भरने का शौक नहीं था बिकॉज इट वाज फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू. सो व्हेन आई ट्रेड आई एम लुकिंग फॉर इंस्टा रिटर्न्स. आई एम नॉट लुकिंग फॉर good I'm not looking to catch the bottom. I'm looking to buy high and sell higher. That is the way I want to look at it. Okay, so my patient said कि just hold on, अब रुको एंड बेसिकली मेरा एक अलर्ट था 8345 के ऊपर कि जैसे ही 8345 जाएगा मैं चढ़ जाऊंगा बिकॉज दैट वाज अ ईयरली ब्रेकआउट. ओके, एंड आई जस्ट गॉट इन बिकॉज माय अलर्ट केम. आई जस्ट नॉट इवन सॉ द प्राइस. आई वेंट, आई बॉट द शेयर्स एंड I got an instant gratification. So while I could have bought it the same thing in the morning, it was available at 8,000. So that I would have made extra 300 rupees maybe. Okay. But from the patient's point of view, because I didn't want to, so it is relative. Why I bought it expensive, still my patience paid off and I made money. However, from the other side of the view, when you buy a pullback, you are buying low and your risk is less. Okay.
so you get returns higher. However, when you take a breakout, okay, your risk is more, but your returns are less. Okay, so similarly, greed जब आप आता है, जब ये like when market was continuously crashing since last 3 days. So anybody who was not able to short on the on Thursday or Friday and were a late short entrance yesterday on FOMO, जो FOMO में कल शॉर्ट मारे रहेंगे, ओके कि ये तो रोज गिरते ही जा रहा है, रोज गिरते ही यार, आज ठोक ही देता हूं मैं भी मार्केट को, okay, they would have suffered the consequences, so that is where their patience did not take off, and they eventually must have lost money. And similarly, somebody who was really looking for a pullback, like yesterday's level when we touched 17,000. Now, if you see on a monthly chart, on a bigger time frame chart, it is a pullback level. If you go to see, so actually level below level काफी है, 16,600 तक भी level है. Okay, but the point is कि अभी कौन से level से घूमेगा वो कोई नहीं बता पाएगा. It's a zone. But anybody who wanted to buy, who could not buy last time at 16,400, was getting an opportunity yesterday to buy at 17,000. But the point is, did they buy? God knows. Did they wait for even more lower level? I don't know. So that is where your patience and your thing comes in. Okay. And now today, a lot of people would have taken, like somebody like me, I would have taken a breakout today. Okay, wherein आज एक एकदम डिसिसिव क्लोज दिया है, एंड हो सकता है यहाँ से अगर आज का लो होल्ड हो गया तो ये ऊपर 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 जाते जाएगा, so that is the way you can look at it. So it works both ways. It depends on which side you like it to work. Can I also tell My question was regarding is yes अविनाश सर, हाँ प्लीज, आपकी तो बिल्कुल चाहिए होगी सजेशन कि इट इज नॉट अबाउट कि कहाँ एंटर किया, जैसे आपने मारुति का एग्जांपल दिया कि 8345 पे आपका ट्रिगर आया कि ये एंटरिंग प्राइस है. मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि एंटर 8345 पे किया. मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 8000 पे भी किसी ने एंट्री की है तो वो कैसे उस ग्रीड और पेशेंस का वो डिफरेंस निकालेगा कि 8345 पे मुझे एग्जिट कर लेना है क्योंकि मैंने तो 8000 पे बाई किया था, या मैं भी 8600 के लिए रुकूं. मेरा क्वेश्चन है कि एंट्री होने के बाद कैसे डिफरेंस पता लगाते हो कि यहाँ पे पेशेंस अब रखनी है मुझे कि मेरे को मेरा टारगेट मिल जाएगा. लेकिन बहुत बार ऐसा होता, मिलता नहीं, बाद में कॉन्शियस कहते हैं अरे यार ले ही लेता, क्या लालच में पड़ा. व्हाई दैट पेशेंस कन्वर्ट्स इनटू लालच, मतलब मेरा क्वेश्चन कैसे पता लगाते हैं उसका. So that I will say very quickly. I will just say, because I have answered the first part. I will only say कि that is will come from your studies one. Okay, आपका क्या time frame है उसके हिसाब से आपका target भी define होगा. However, there are times when target को touch नहीं करता, उससे पहले ही घूम जाता है. Okay, so like for me, it is always simple. It is either my trailing stop loss or my target. I don't deviate in between. Okay, अगर गया तो गया. There have been times when I have seen in certain price, I have seen, how do I put it in percentage terms? I have seen, 5-7% upside, and then it has hit my trailing stop loss because my target was 9% or 10%. Okay, so that is part and parcel. You'll never get the top, you'll never get the bottom. However, you have to be convinced that you followed a set of rules which you have made and which you have tested in the past, and that is what it is. Because end of the day, stock market is all about probability. There's nothing short in this. तो लास्ट वाली स्ट्रेटेजी है ना कि मुझे इतना चाहिए वाली स्ट्रेटेजी कि मुझे इतना चाहिए, मेरे को 120 मिल रहा है, आ गया प्राइस, निकलो, उसके बाद वो 140 हो, 50 हो, पेशेंस ग्रीड गई साइड में. मतलब एक ही स्ट्रेटेजी है. Probability. It is probability. There is nothing short. Yeah, so I'm done. Yeah, I think पूजा जी, मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल व्यू पे बताना चाहता हूँ. ग्रीड और लालच का डिफरेंस क्या होता है, पेशेंस. हाँ जी सर, जरूर. तो पहली बात तो मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल बताऊंगा, शायद काफी टेक्निकल एनालिस्ट में भी देखा होगा कि 2 दिन में बाजार में इतनी भारी बिकवाली आई, लेकिन एक शेयर है जो आज भी 17% ऊपर था. कंपनी का नाम है शारदा क्रॉप केयर. Now this company, about 6 to 8 months back, it was trading at just 300-320 rupees. कोई भी नहीं देख रहा था. तो क्लियरली पेशेंस का मतलब क्या है कि आपने कोई बिजनेस के ऊपर पैसा लगाया, यू पुट सम मनी ऑन सम कंपनी. The most important thing is, if you have got full conviction on the business, then whatever the market says, whatever anybody says, you will probably hold on to that stock. And that exactly happened with our clients. We told them to buy between 300-320. काफी clients ने
बोला सर अविनाश जी शेयर बढ़ नहीं रहा है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है। उसके तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स आ गए, आप देखिए 2 दिन में स्टॉक कम से कम 20% ऊपर है और आज भी मेरे ख्याल से अपर सर्किट पे लॉक हो गया। So now guys who had the patience have made the money. Now the second quality of buyers in the market who have got greed, typically people who play for short term moments, those guys will come in. अभी वो बोलेंगे भाई 500 525 में भी हम लोग खरीद लेंगे और 50 रुपया 100 रुपया बढ़ेगा। So basically you have to decide what you want, whether you want only the short term momentum or you want the bigger picture. If you want the bigger picture then you have to have patience. सीधी सी बात है, आपको अगर सिर्फ 25-50 1 या 2 या 3% के मुंह से आप काफी हैप्पी हो जाती हो तो फिर आपके लिए टेक्निकल इज द राइट वे। बट इफ यू वांट टू प्ले द बिग मूव एंड यू वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेशेंस, तो आपको बाजार में ज्यादा होल्डिंग पीरियड रखने की जरूरत है। और ये मैं आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि हमने खुद देखा है कि ट्रेडिंग से आप 2-3-5% कमा सकते हो, बट यू कैन नॉट मेक अ 50 बैगर और अ 10 बैगर और अ 2 बैगर। इतना ज्यादा पैसा आज तक किसी ने ट्रेडिंग में कमाया नहीं। तो ऑब्वियसली देयर आर प्लसेस एंड माइनसेस, फंडामेंटल कॉल भी गलत हो सकते हैं, बट पेशेंस उन्हीं लोगों के लिए जो ज्यादा टाइम होल्ड करना चाहते हैं, और ग्रीड उन्हीं के लिए होता है जो शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। So that is the basic difference between greed and patience. So clearly मार्केट में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाने के लिए, लेकिन हायर लेवल्स पे आप कब फंस जाओगी, आपका पैसा कब फंसेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और अभी तो मैं वही कह रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट द टेक्निकल गाइज विल से अबाउट शारदा क्रॉपकेप, बट अभी जिस प्रकार से स्टॉक गया है मुझे लग रहा है कि आने वाले शायद 1 या 2 3 या 4 दिन में वापस आपको करेक्शन देखने को मिले। तो जो लोग अभी 100-500 में या 530 में एंट्री कर चुके हैं वो ये बात भूल चुके हैं कि शेयर 350-360 से चला है, तो ऑब्वियसली इतने बड़े मूवमेंट के बाद आपको अगर लालच आती है देन यू हैव ऑब्वियसली मिस टाइम दैट एंट्री। तो दिस इज द ओवरऑल वे ऑफ लुकिंग एट इट फ्रॉम अ ग्रीड एंड अ पेशेंस पर्सपेक्टिव। पेशेंस उन्हीं लोगों के लिए रेलेवेंट है जो ज्यादा होल्डिंग पीरियड रखने की कैपेसिटी रखते हैं। सर बिल्कुल सही कहा, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन सर जानते हो प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, जब वही शेयर जिस दाम में हमने खरीदा होता है 150 रुपए ऊपर भाग के वापस उसी दाम में मिलता है, और फिर हम सोचते हैं अरे यार हमें तो 15,000 आ जाता अगर हमने मतलब 100 क्वांटिटी खरीदी हुई। आप पूछो कि मैं अगर एग्जाम्पल दो पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैंने एक RIL खरीदा था 850 पे, ठीक है, वो 1030 गया, मैंने सिर्फ पेशेंस के चक्कर में उसको बेचा नहीं, अब वो फिर से 850 में मिल रहा है, और मुझे ये आ रहा थॉट कि अरे यार ये तो मैं बेच ही लेती, मतलब इतना अच्छा प्राइस मिल रहा था क्योंकि उसकी न्यूज भी आ गई कि बजट में मतलब बिल्कुल अनाउंसमेंट होगी। एग्री करता हूँ, लेकिन देखिए उसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी किसी ने बोला कि मैं टाइटन 500 रुपए में लिया, आई मेड लॉट ऑफ मनी, बट देन यू मस्ट अंडरस्टैंड आप कौन से टाइप के बिजनेस के शेयर को खरीद रहे हो। अगर आपने मान लीजिए ये शारदा क्रॉपकेम खरीदा है, तो शारदा क्रॉपकेम ऊपर क्यों गया ये थोड़ा सा लेट अस अंडरस्टैंड। बेसिकली एग्री कमोडिटी, एग्री फर्टिलाइजर, एग्रोकेमिकल्स में ये काम करती है, तो मार्केट में बजट के पहले ये थोड़ा सा रन अप हो चुका है। You cannot expect that this company will continue to outperform for the next 1-2-3 years. उसमें ऊपर नीचे वोलेटिलिटी आती रहेगी। अभी आपने टाइटन लिया है, तो टाइटन तो B2C वाली बिजनेस है, आपको शायद B2C का बिजनेस पता होगा, जो डायरेक्टली हम कस्टमर्स को बेचते हैं उसको हम लोग B2C बोलते हैं। और B2B जैसे DHIL के रिजल्ट्स थर्सडे को आने वाले हैं, तो ये बेसिकली सरकारी कंपनी। तो यहाँ पे आपको अगर किसी ने कहा कि चलो अविनाश जी आप BHIL में 5 साल का व्यू लेके काम करिए, तो पैसा ऐसे शेयर से बनाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हर साइकिल में कंपनी ऊपर नीचे परफॉर्म करेगी, और इंडस्ट्री साइकिल का अपटर्न कभी होने वाला है, कभी वो साइकिल खराब होगी, कभी वो साइकिल इंप्रूव होगी, ये भी सारी बातें हम लोग फंडामेंटल्स में स्टडी करते हैं। सो बेसिकली सी देयर आर ऑलवेज गोइंग टू बी प्लसेस एंड माइनसेस। कभी कभी आपका बैड लक ही है कि आपने बेच दिया फिर बाद में वो नीचे आए। 90% ऑफ द टाइम इफ यू आर इन द राइट सेक्टर, इन द राइट साइकिल एंड विद द राइट कंपनी मैनेजमेंट, आप पैसा बनाओगे। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग नोबडी कैन टाइम द मार्केट। आज कोई भी बाजार में आपको बोलेगा नहीं कि मैंने एकदम लोएस्ट लेवल पे खरीदा और ऊपर के लेवल पे बेचा। हम लोग सारे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है, गलतियां होती है। तो मैं वही आपको बोलूंगा कि ट्राई टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो वेयर यू टेक अ 2 to 3 ईयर कॉल, जहाँ पे आप एज्यूम करिए कि भाई ये 3 साल में मेरा पैसा डबल होने वाला है, और उसके बीच में आपको कोई आगे पीछे देखना है। यहाँ स्टॉक सिलेक्शन, सेक्टर सिलेक्शन, साइकिल कौन से लेवल पे है, अच्छी है खराब है। अभी आप देखिए एथेनॉल की कंपनियां 1.5 साल पहले कोई नहीं देख रहा था, आज आप सारी एथेनॉल कंपनीज देखिए क्यों बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को अभी पता चला है कि एथेनॉल इज लाइक गोल्ड। गवर्नमेंट को बहुत सारा एथेनॉल चाहिए और उतना सप्लाई नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ साइकिल एंड इंडस्ट्री काइंड ऑफ ट्रेंड्स विल कीप ऑन चेंजिंग। I mean, you need to read a lot. I mean,
विदाउट रीडिंग मैं समझता हूँ आपको कुछ ज्यादा अवेयरनेस नहीं होगी। प्योरली फंडामेंटल वाले टेक्निकल वाले के कंपैरिजन में हम लोग को बहुत सारे बिजनेसेस, बहुत सारे इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना होता है। बट अनलाइक दैट द टेक्निकल गाइज ओनली टेक ओवर फ्रॉम द वॉल्यूम एंड द प्राइस। So basically, if you are a technical trader, obviously you can follow that method, but you need to have some perspective. कुछ तो बैक एंड में आपका एक अवेयरनेस होना चाहिए कि भाई ये क्यों बढ़ा, सिर्फ बढ़ने के लिए बढ़ा या कोई उसमें कोई स्टोरी बन रही है या और थोड़ा बढ़ सकता है। तो these are the things which you have to keep in mind. So net I think you have to take your chances, but patience is always going to be rewarded if you are in the right sector and the right stock. Thank you, sir. So nice to hear you. Thanks a lot. Thanks, Kiran. Thank you. That's really an amazing thing. मतलब पूजा में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ग्रीड, फियर एंड पेशेंस। आपने फियर रह गया, पेशेंस और आपने ग्रीड डाल दिया। फियर भी डाल देते तो पूरा सेशन और लंबा खींच सकते थे। बट एनीवे, आई थिंक सौरभ सर, अविनाश सर एंड धीरेन्द्र सर, दे ऑल थ्री टुगेदर हैव गिवन अस अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑन दैट। कि धीरेन्द्र सर ने अपना ट्रेडिंग वाला एक्सपीरियंस बताया, अविनाश सर ने अपना इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस बताया, सौरभ सर ने तो अपनी एक्सपीरियंस स्टोरी बता दी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग ऑन अ पार्ट एज वेल। सो जो कहते हैं मार्केट में पैसा इजीली नहीं बनता, उसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हम कितने लॉन्ग टर्म स्टे आउट कर सकते हैं। द पेशेंस काइंड ऑफ हिस्ट्री एज सौरभ सर हैज गिवन आउट कि टाइटन 500 का रखा, तो इट्स अ क्लियर कट थिंग। आज उनसे पूछो सौरभ से, सौरभ सर आज आप टाइटन बेचोगे? सौरभ सर बोले नहीं भाई, क्यों बेचो, 500 की चीज ली हुई है, 2,500 का कॉस्ट तो मैं वैसे ही निकाल चुका। सो दैट मीन्स उनको पेशेंस आ चुका है। अगर यही चीज अगर ट्रेडिंग में की होती है तो आप कहते हैं 500 की चीज में भी 1000 होगी, पहले बेच के निकलो। दैट इज द ट्रेडिंग माइंडसेट, आई थिंक, जो आज पूरे सेशन में इन सब ने डिस्कस आउट भी किया है। एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग एज वेल कि हम एसआईपी जब स्टॉक्स की बात करते हैं या फिर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, दे ऑल बोथ टुगेदर टॉक्स अबाउट अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पार्ट, कि हमें लॉन्ग टर्म में पैसा कैसे बनाना है। और आई थिंक मनी हमें लॉन्ग टर्म में बसता है। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि अगर हम कोई जमीन खरीदते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते वो जमीन हमें अगले दिन ही डबल पैसे दे या हमें अगले साल ही दे दे। इट टेक्स अराउंड 5 years 10 years एज वेल। जब वो 5-10 साल लेते हैं तो ये तो बिजनेस है। बिजनेस तो कहते हैं ये सर मैं 20 साल का तो बच्चा हुआ, 10 साल का बच्चा हूँ, 5 साल का बच्चा हूँ, 25 साल हो जाने तो बिजली सिल्वर जुबली बनेगी। So that is how I think business is about for fundamentals and for technicals as well. And I think that's the purpose of today's session as well, कि हम सबको लर्निंग कुछ ना कुछ मिलते रहे। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि किसी ने कहा उठा लिया, इट्स अबाउट हाउ वी आर प्रिज्यूमिंग इट, हम उसका प्रिडिक्शन कैसे कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज कैसे कर रहे हैं, उस बिजनेस मॉडल को समझ कैसे रहे। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे वी हैव आर डिस्कस आउट। आज आदित्य ने भी ये बताया, सौरभ सर ने बताया, एंड आई थिंक सौरभ सर और अविनाश सर, आज आप दोनों की जुगलबंदी और अच्छी हो गई, काफी पुराने दोस्त यार मिल बैठे आज। थैंक यू। नहीं, एक पॉइंट मैं बोलूंगा, देखो इन्वेस्टमेंट में भी मिस्टेक होता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं राकेश झुंझुनवाला की बात करूं कि मैंने देखा था कि ही हैज इन्वेस्टेड इन टाइटन इन 1990s में, ठीक है, वो तो मुझे भी नहीं मालूम कब इन्वेस्ट किया, बट ही डिडंट सोल्ड एनीथिंग मैंने। बट उन्होंने, मेरे को याद है 2008 या 9 या व्हाट एवर ईयर इट वाज, उन्होंने सुवेक्स करके कंपनी है उसमें डाला था पैसा, 80-90 रुपए का दाम था, फिर वो 30-40 रुपए आया तो वो निकल गए। सी अल्टीमेटली देखिए, मिस्टेक इज बाउंड टू हैपन, आप वो इन्वेस्टमेंट करो ये, बट कैसा है कि आपने 2-3 साल में देखा कि नहीं हमने मिस्टेक किया है, स्टॉक चल नहीं रहा है, अपने प्राइस से डाउन है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने अशोक लेन में किया था, वो चला नहीं 2-3 साल 4 साल, आई एक्सेप्टेड दैट, मैंने शायद लॉस में ही बेचा था, बेच के कोई और कंपनी में डालना हो। अच्छा, दूसरी बात आपने बोला कि मैं टाइटन, अगर मान लीजिए कि टाइटन आज मेरे पास है या व्हाट एवर इट इज, तो वो मैं बेच के मैं किस में पैसा डालूं जो उससे ज्यादा मेरे को ग्रोथ दे रहा है? तो ऐसा कंपनी भी होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मैंने, देखिए ये मोमेंटम पोर्टफोलियो वाला बात नहीं है, ये है इन्वेस्टमेंट जो मैं 8-10 साल में रख सकता हूँ, अनलेस एंड अनटिल मेरे को कोई पैसे की जरूरत ना पड़े, देन आई एम नॉट गोइंग टू सेल दी स्टॉक्स, आई एम गोइंग टू कीप इट। आज टाइटन अगर 1500 भी हो जाए तो आई एम गोइंग टू कीप इट ओनली, या 3500 भी हो जाए तो भी, वो पर्सपेक्टिव से है। जैसे किसी ने क्वेश्चन किया था, एक मैडम ने, मेरे को नाम याद नहीं, कि 800 में लिया, 1000 हो गया, फिर 800 हो गया। देखिए देयर हैज टू बी 2 टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो और 2 टाइप्स ऑफ अप्रोच होना चाहिए। एक है इन्वेस्टिंग अप्रोच, जो मैंने स्टॉक एसआईपी के में थ्रू कर रहा हूँ। जैसे अविनाश जी ने बोला कि ही डोंट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, ही इज अ डायरेक्ट इक्विटी में डालता है, मेरा भी वही फंडा है
कि म्यूचुअल फंड से डालने से अच्छा डायरेक्ट इक्विटी में डालो, एक वेल्थ क्रिएशन होगा, ठीक है, वही स्टॉक्स रहेगा जो क्वालिटी स्टॉक्स है, क्वालिटी पोर्टफोलियो। दूसरा ऐसा है कि आर्गुमेंट से कि मोमेंटम वाला, जैसे आपने किसी ने एग्जांपल दिया कि उन्होंने मारुति लिया है, आर्गुमेंट से 8300 में लिया है और 8600 हो गया, तो इन दैट केस इफ इट इज योर मोमेंटम बेट, तो उसको ट्रेल करते रहो, जो ट्रेंड फॉलोइंग प्रिंसिपल है उसको ट्रेल करते रहो। देखिए कल क्या होगा वो ना मुझे मालूम है ना किसी को, नोबडी नोस, योर गेस इज एज गुड एज माइंड। आप अगर मान लो कि मारुति हो सकता है 9000 भी चला जाए 3 दिन में, या हो सकता है ये 7500 भी आ सकता है, देखिए ये मार्केट है, क्या होगा किसी को नहीं मालूम। तो इन सच केसेस में जो अगर आपका ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है तो वो तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही करना पड़े, ऐसा है। इन्वेस्टमेंट टोटली अलग है। आज अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास मैं टाइटन को राइट किया है, 500 वाला 300 भी देखा है, 300 वाला 2500 भी है, वो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, बट अगर ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में होता तो शायद मेरा अप्रोच डिफरेंट रहता। दैट इज माय ओनली लिमिटेड पॉइंट। अगर ट्रेडिंग है या मोमेंटम प्ले कर रहे हो, देखिए मोमेंटम कब कौन से सेक्टर में आने वाला है या कौन से स्टॉक्स चलने वाला है किसी को नहीं मालूम, वो बहुत ही डिफिकल्ट गेम है, उसमें तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही अप्रोच करना पड़े। दैट इज माय लिमिटेड पॉइंट। दोनों अलग चीज है, दोनों का अप्रोच आप अलग रखिए। थैंक यू। That's a valid thing. That's a valid thing as well. And even धीरेन सर, मनी आई थिंक वो लिसनर में चला गया, एक बार उनको भी ले आइए, अविनाश सर भी लिसनर में चले गए टू टेक बच्चे इसी चक्कर में। And also, hi Kshitiz sir, welcome to our room again. Good to see you sir after a long time. Hi guys, and fantastic topic of discussion today you all have. So I was amazed to see that somebody is actually talking about upon stocks and MF. So what I prefer, I will like to add to that. And thanks for giving me opportunity to speak. And thanks to all the speakers who were sharing their, you know, their thoughts. It's always good to learn from fellow colleagues. So No sir, it's always a pleasure to have you here as well. क्लब हाउस पे अपन रहते हैं सर, यहाँ पे भी आप हो तो मिलके तो चलता ही है सब। Thank you. So I prefer, you ask me, I prefer first a discipline. I prefer focus. I prefer one single sheet portfolio. I prefer a long-term view. I prefer to sell if if principally the company is going wrong, if some disruption is coming or economic mood is coming. So you ask me, uh, uh, depending on how much learned you are, you can divide your portfolio between a mutual fund and a stock. And if you don't have control on your your actions on how the stocks are moving, you better be in mutual fund. That's the right thing to do. And if you still don't have control, and you are very disruptive in terms of your actions, then my request is that go for a tax saver mutual fund. At least there will be a 3-year locking. Point is, wealth is not created with a magic wand. We in the power of compounding. What is the formula for compounding? Future value is equal to present value bracket 1 plus r bracket close raised to power t. We keep on focusing on R, 12%, 15%, 18%, 20%. But the magic lies in T. The more you focus on time, this action will come. Warren Buffett portfolio, which is in billion of dollars, in hundreds of billions of dollars, comes in one page. Then why most of us are having a tail of stocks, tail of mutual fund? Why is so? You have to be focused. Believe me, if you really want to create a difference in your approach, you have to be focused, and that focus can only and only come uh, by sticking on and by following a disciplined routine. That if you decided that we are buying 2 Reliance every month or one Infosys every month, and you are having 18, 20,000, 30,000 SIP going every month, it has to keep going. Don't worry about the price. Focus on the number of units and focus on the number of shares. Have a target of shares now. I should have 1,000 Reliance or 10,000 Reliance or 500 Infosys. But let's say I have 10,000 units of Reliance Growth Fund. You know what is the value of Reliance Growth Fund? Is mutual fund में 10 रुपए की NAV पे शुरू होता है. Reliance Growth Fund has a NAV of more than 2,200 today. It has gone up by more than 222 times in last 23-24 years. So बॉस वी कीप ऑन सेइंग 100 बैगर 200 बैगर्स. यहाँ पे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ अपना 100-200 बैगर तो पुरानी कहानी है. वी हैव फंड विच हैज डन सो वेल. एंड व्हाट स्टॉप्स अस? हमें कौन स्टॉप करता है कि हम
अगर वो फंड 22 साल में ऐसा कर सकता है, व्हाट स्टॉप्स अस इन होल्डिंग दैट शेयर? समबडी वाज टॉकिंग अबाउट मिस्टर झुंझुनवाला, आई एम ब्लेस्ड टू मेट हिम कपल ऑफ टाइम। वो 4 पे भी लिए टाइटन, वो 400 पे भी लिए और 700 पे भी लिए। सो नॉर्मली पीपल हैव कैपेसिटी, यार 200 रुपये बढ़ गया यार, डबल हो गया यार। अरे भाई वो बिजनेस जो है वो डबल होने के लिए नहीं आया यहाँ पे। That businessman or the CEO, most of the good company CEOs, they don't keep on looking at market share price and they keep on running their shows. They keep on running their shows. Try and understand how it works. If you, any of you have pet at home, I've given this example earlier also, and I want to be repetitive. Can I share this example? Yeah. So if you have a pet at home, morning when you step out of home to take him for a walk, आप बाहर इकट्ठे निकलते हो और आपका पेट इकट्ठे बाहर निकलता है. You take 2, 3, 4 rounds of your colony or park or whatever. In that entire round, you will like to move straight, okay? But your pet, your boy, your girl, dog, they keep on pulling you right, left, आगे, पीछे, नीचे, यहाँ सूंघेगा, वहाँ सूंघेगा, जो भी है, he is active. Now, when you come back home, तो आप दोनों इकट्ठे वापस आते हो. इस पूरी स्टोरी में जो आपका पेट है ना, वो है आपकी कंपनी का भाव, और जो आप हो ना, वो हो उस कंपनी के एक कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए अर्निंग नंबर्स, growth. So eventually growth, if any disruption is not coming, keeps on coming at a different, as a specific place. But market price of a given company, which is the underlying of any stock mutual fund portfolio also, is dependent on a lot of things: macros, micros, FI pulling out, some freebies are taken away, or unwinding of stimulus, or some war, corona. There can be hundred and zillions of things. Inflation, RBI policies, Fed policies. So they can be anything on which the price depends. But eventually, if you see Nifty earnings, our nominal GDP, which is a sum of real GDP and inflation, and on an average Nifty returns they're in line with 12 to 13% for the last 25 years. So friends, focus on that long-term part of the story. Have a disciplined breakup between your mutual fund and SIPs, and just enjoy the fruit of compounding, which will come if you will hold it for long. That's from my side. May I speak, please? May I speak? Yeah. First of all, thanks to host for arranging such a nice topic today. तो ऐसा है कि अविनाश सर ने सही बोला था कि मार्केट को जब हम टाइम, आवाज आ रहा है मेरा? या ओके. तो आज का टॉपिक पे मैं कुछ बोलना चाहता हूँ. अविनाश सर ने सही कहा कि हम लोग अगर मार्केट को टाइम करने जाते हैं तो मार्केट हमारा टाइमिंग कर देता है. ठीक है. तो आज की डेट में अगर सबसे पीसफुल वे है पैसा कमाने का तो वो SIP है. उसमें भी अगर हम लोग अपने स्टॉक्स में SIP करते हैं तो वो ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि स्टॉक्स को हम स्टडी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. और बेसिकली मैं जो SIP करता हूँ मैं स्टॉक्स में ही करता हूँ. दूसरा कहने का बात ये है कि SIP एक ऐसा टूल है जिसको बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उसका अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखोगे तो काफी अच्छा होता है. जैसे अगर सिंपल कैलकुलेशन है, हम 20,000 का भी SIP करते हैं और 18 से 20% के रिटर्न में 15 साल में 2 करोड़ के ऊपर पैसा बन जाता है. ठीक है. तो उसमें ये सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, ये सीखेंगे, पोजिशनल ट्रेड करेंगे, और फिर मार्केट में ये सब इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब सिनेरियो आते रहते हैं, मार्केट अप डाउन होता रहता है, उनका BP भी अप डाउन होता रहता है. लेकिन वो सब करने के बजाय अगर हमने 8 या 10 स्टॉक कोई भी चूज कर लिए और उसमें कंटिन्यूअसली SIP किया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लाइक 15 years और 20 years, वी कैन अर्न रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी. आज के डेट में अगर देखोगे आप, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक में, या एशियन पेंट जैसे स्टॉक हो गए, पीडीलाइट जैसे स्टॉक्स हो गए, इन्होंने सब कुछ मार्केट के सारे साइकिल देखे हैं. 2008 का क्रैश भी देखा है, कोरोना क्रैश भी देखा है, सब कुछ देख लिया, लेकिन फिर भी आज की डेट में ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है. तो बेसिकली हमें स्टॉक सिलेक्शन करने आना चाहिए. स्टॉक सिलेक्शन भी करना है तो निफ्टी 100 या 200 के बीच में स्टॉक सिलेक्ट करो, ताकि वो फंडामेंटली थोड़े अच्छे होते हैं. और अगर आपको
फंडामेंटल भी नहीं आता है और टेक्निकल भी नहीं आता है, तो मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका है फॉर द एसआईपी, मैं क्या करता हूँ, सिंपली वीकली और मंथली चार्ट देखता हूँ। उसका अगर ट्रेंड लाइन 45% डिग्री में अप हो रहा है, तो फिर मैं उसमें से थोड़ा फंडामेंटल ये सब स्टडी करता हूँ, और फिर वो स्टॉक्स मुझे एसआईपी के लिए अच्छा लगता है। तो फिर मैंने वही स्टॉक्स है जो मैंने मतलब इस तरीके से जो चूज किए है, लाइक टाटा इलेक्ट्रिक, एलटीआई, एलटीटीएस, बजाज फाइनेंस, Divi's Lab, something. These are very good stocks for the SIP that I am presently doing. So, अगर स्टॉक सिलेक्शन करना है, सिंपल रखो, वीकली चार्ट देखो, मंथली चार्ट देखो, 45 डिग्री में आप हो रहा है तो वो स्टॉक को सिलेक्ट करो, और वो स्टॉक्स में कम से कम 5 या 10 साल पिछले देखे होने चाहिए, मतलब एक साइकिल देखा होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये उसमें क्राइटेरिया रखो। और आपको अगर देखना है, सिंपली आप अगर देख रहे हो कि ये स्टॉक ने 10 साल में कितना सीएजीआर रिटर्न दिया, जैसे बर्जर पेंट है, उसने लास्ट 10 इयर्स में 36% सीएजीआर रिटर्न दिया है, ठीक है। बजाज फाइनेंस ने अराउंड 50% दिया है, ठीक है। डिविज लैब ने 28% दिया है। तो ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो विथ ट्रेंड लाइन, ठीक है। और उसी स्टॉक्स में आप आराम से एसआईपी करते रहो, आपको आराम से पीसफुल वे में रिटर्न मिलेगा। यही बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। Hello, Manigar sir, may I allowed to speak? This is Maulik here. Yeah, I think you can go ahead, please. Yeah, thank you so much. I was waiting from so long. एक्चुअली मेरे को किसी को ओपोज नहीं करना है, मतलब हम लोग यहाँ सीखने के लिए ही इकट्ठा हुए। मेरे ख्याल से मैं शायद आप लोगों के साथ पहली बार जुड़ रहा हूँ। आपका नाम मैंने मणिगर सर, मैंने ऐसे मणिगर सुना हुआ है इससे पहले। तो मेरा एक कहूँ कि अगर कोई स्पीकर है कि जो मतलब गलत तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा भी मतलब आउट ऑफ द ट्रैक या आउट ऑफ द मतलब बॉक्स बोले, तो उनको मतलब मैं तो बहुत ही छोटा सा इंसान हूँ और मैं तो बहुत छोटा सा इन्वेस्टर हूँ। फिर भी मेरे को, मैं मतलब मेरे मदर के नाम से ARN होल्ड कर रहा हूँ, ये डिस्क्लोजर है। मेरा म्यूचुअल फंड का बिजनेस है लास्ट 4-5 साल से। तो एक सर ने, किसी ने बोला था, कौन बोल रहा था वो भी मेरे को पता नहीं है, उनके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, शायद वो भी मेरे को जानते नहीं होंगे, मैं भी उनको नहीं जानता हूँ। लेकिन वो बोल रहे थे कि भाई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो मतलब ये राइट्स और बोनस और मतलब जो है वो, मतलब वो SIP करेंगे तो वो मतलब बेनिफिट रहता है। तो वो म्यूचुअल फंड में भी इनडायरेक्टली बेनिफिट रहता ही है कि भाई वो लोग भी मतलब राइट इश्यू के लिए एलिजिबल होते हैं, बोनस के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो म्यूचुअल फंड में भी अगर वो स्टॉक किसी के म्यूचुअल फंड होल्ड करता है तो उसको भी बेनिफिट मिलता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो मतलब किसी इन्वेस्टर ने पर्सनली होल्ड किया है तो ही मिलेगा। तो एक मेरे को ये थोड़ा सा एडिशन करना था उनके बोलने पे कि भाई मतलब बाकी जो मतलब कोई नया इन्वेस्टर है या कोई नया नया मार्केट में है तो उसको मतलब कंफ्यूजन ना हो या मिसकंसेप्शन ना हो। तो एक ये मेरा चीज था। और मैंने एक कोई, मैं किसी को सुन रहा था, मेरे को ध्यान नहीं है कौन बोल रहा था, कि 1999 से मतलब 2 साल ही हुए थे कुछ SIP का मतलब कंसेप्ट आया था, तब से SIP कर रहे थे। और कुछ 2011 में उन्होंने सब निकाल दिया और फिर 2017 में मैंने भी देखा। तो उनका मेरे को चीज बहुत ही पसंद आया। आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मतलब उनका अपना ये चीज शेयर किया। तो मैं उन्हीं से, मतलब कौन था वो भी मेरे को ध्यान में नहीं है, तो उन्हीं से मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई मेरे को हम सबको थोड़ा इंसाइट दे के अभी वो कौन से म्यूचुअल फंड में मतलब अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद उन्होंने वापस शुरू किया, ऐसा भी उन्होंने बताया कि वो देख नहीं रहे। तो वो बहुत ही मतलब मेरे लिए, मैं भी मतलब म्यूचुअल फंड का बहुत खासा मेरा खुद का अच्छा पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो मैं मतलब मेरे खुद के लिए और मेरे इन्वेस्टर के लिए भी, मेरे को मतलब आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया है, वो समझ सकते हैं हम कि भाई हर कोई मतलब हर कोई चीज वेबसाइट पे, मनी कंट्रोल पे वगैरह पे, मॉर्निंग स्टार पे मिलता है। लेकिन फिर भी कोई कोई चीज ऐसा होता है कि भाई
किसी का नॉलेज होता है वो मतलब उसमें परफेक्शन ज्यादा होता है और वो मतलब क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं, तो उनसे मेरे को थोड़ा इंसाइट्स चाहिए कि वो मतलब कौन से फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, म्यूचुअल फंड में, और मतलब उनका क्या फंडामेंटल मतलब वो देख रहे हैं उसके पीछे कि लॉन्ग टर्म में ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है जैसे करेगा, या जैसे कि उनका फंड मैनेजर अच्छा है या पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, मतलब ऐसे। थैंक यू सो मच। I think ओके, that सो मौलिक जी, इट वाज मी, बेसिकली धीरेन, इट वाज मी जिसने 2007 में चालू किया था, 2011 में बंद किया और फिर से 2017 में शुरू किया है। ओके, एंड सो मेरा स्टाइल बहुत अलग है। ओके, मैं आई प्रेफर, मेरा इन्वेस्टमेंट भी 5 स्टॉक से ज्यादा नहीं होता है। ओके, लॉन्ग टर्म का, सो आई गो रियली डीप। ओके, सो मेरे पास म्यूचुअल फंड भी मेरे पर्सनल कैपेसिटी में खाली 3 है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या so I have Mira SI Blue Chip. I have SBI Small Cap, and I have like Parak Parik. Okay. However, ये मेरा पर्सनल का जो है, ओके, एंड बाकी बिकॉज लार्ज कैप्स में खुद पर्सनली करता हूँ स्टॉक से, तो वहां मैं SIPs नहीं करता. लाइक आई डू different way of investing in large caps, so that's why this is small cap. I have some, Parag Parek is a quite a multi cap fund, and uh, Blue Chip Emerging is also got little bit large caps, and balance it's got a mixture again, so that is what it is. And बाकी मेरे वाइफ के अकाउंट में आई हैव सम, सो आई हैव मेरा एसेट का लार्ज कैप है, फोकस्ड, आई थिंक मेरा एसेट का फोकस है, आई थिंक कोटक का एक है, और आई थिंक इज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक पहले DSP था और बाद में मैंने मूव किया था, बिकॉज आई थिंक इट अंडर परफॉर्म फॉर सम रीजंस, एंड आई डोंट लाइक टू कीप अंडर परफॉर्मेंस विथ मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. सो इफ आई गो रॉन्ग, आई मूव आउट, सो माई वाइफ हैज बीन इनटू म्यूचुअल फंड सिंस 2015 नाउ. ओके, सो उसका जो भी इनकम होता है, जो भी होता है, वो उसके थ्रू होता है, एंड दैट इज व्हाट इट इज. एंड yeah, so that is what I do. So thank you so much. I really hope that answers your question well. I could see Mr. Kuldeep wanted to say something. Before that, I just Yeah, wanted man. to Anil, I would just request you, please continue. I think we'll give chance to everyone out here. So, guys, I'm so sorry that our panelists are actually getting dropped off again. I could see Mr. Sanchit is getting dropped again and again. I don't know about this Twitter glitch. So, I think let's get over this Hello. particular topic. Yeah, Kuldeep ji, please go ahead. ओके, थैंक यू वेरी मच. एक्चुअली काफी देर से मैं वेट कर रहा था, और इसके दौरान ही कुछ 4-5 बार ट्विटर पर मेरा स्पेस भी क्रैश हो गया, तो बड़ी मुश्किल से दोबारा कनेक्ट किया है. सो सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा इसके अच्छे टॉपिक के लिए. और एक्चुअली आई एम बिग फैन ऑफ अविनाश जी, और काफी अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया, जितना भी मैंने थोड़े टाइम में पीछे सुन पाया, क्योंकि काफी बार क्रैश हुआ स्पेस ये. तो इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अपनी तरफ से यही कि आप ये जो सारा एक प्रोसेस है, अगर इस आप कुछ सारे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, तो आपको काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद मिलने शुरू हो जाते हैं कि सिप और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो. तो अगर आप दोनों में से कुछ भी चूज करते हैं, स्टॉक में सिप करते हैं या म्यूचुअल फंड में सिप करते हैं, तो उससे सबसे पहले स्टेप यही है, तो आपको अपना रिस्क टॉलरेंस जो है वो चेक करना पड़ता है कि आप कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं. तो सबसे पहले ये आपको असेस करना बहुत जरूरी है. अपना रिस्क एपेटाइट चेक कीजिए, तो उसी हिसाब से ही आप इन्वेस्ट कीजिए, चाहे स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में, क्योंकि दोनों में ही देखिए आपको मार्केट के हिसाब से ही रिटर्न मिलेगा. मार्केट जैसे काम करती आई है, मार्केट का जैसे स्ट्रक्चर है, तो ये वोलेटाइल रहता है. इस पे आपको कुछ ऐसा गारंटेड नहीं है कि एवरी ईयर यू विल बी इन प्लस आपको 30% या इतना रिटर्न मिलेगा, कुछ जैसा अगर पिछले 1-2 सालों में हुआ है. तो ज्यादातर इन्वेस्टर जो मार्केट के अंदर आते हैं वो बुल रन में आते हैं, और खासतौर पे बुल रन की लास्ट लेग में आते हैं. तो उनका सिर्फ यही मेन जो रीजन होता आने का, तो उनको होता है उनके फ्रेंड्स में या उनके रिलेटिव्स में या उनके पड़ोसी ने पिछले 3-4 साल में इतना रिटर्न बना लिया, सबका इतना बन गया, तो उसी को देख के ही वो आते हैं. तो इस तरह से जो इन्वेस्टर होते हैं, तो वो लास्ट में ही घुसते हैं, जब ये ऑलमोस्ट जो रैली है, जो बुल रन है, वो खत्म होने वाला होता है.
तो ज्यादातर वही इन्वेस्टर को जो है मार्केट स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा नहीं कमा पाते। तो मेरे कहने का यही पर्पज है कि सबसे पहले आप एक रिस्क अपना चेक कीजिए, रिस्क एप्टाइट देखिए कि आप कितना रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो, तो उसी हिसाब से आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एसेट एलोकेशन। तो अगर आप का रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है और आपने 100% इक्विटी में डाल दिया और कल को 20% माइनस पोर्टफोलियो चला गया, तो उस टाइम पे ये इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग करते हैं और लॉस लेके निकल जाते हैं। तो उसका सबका रीजन यही होता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने रिस्क से बढ़ के ज्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ज्यादा एक्सपोजर इक्विटी में लिया है। तो आप एसेट एलोकेशन कीजिए, देखिए कितना आप इक्विटी में डाल सकते हैं और कितना प्रपोर्शन आपको डेट में डालना चाहिए। और थर्ड जो पॉइंट है वो ये है कि आप हमेशा इक्विटी में तभी आइए अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है, और लॉन्ग टर्म यहाँ पे मिनिमम 5 ईयर। अगर आप कम से कम 5 ईयर के टाइम हॉराइजन या इससे ज्यादा के लिए मैं तो कहूंगा कि कम से कम 8 और 10 साल का आपका व्यू होना चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए म्यूचुअल फंड में या सिप में। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एज ए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि आप 3 महीने या 6 महीने में इतना रिटर्न बनाना चाहते हो, इसलिए आपने कुछ मार्केट का बाय और डिप किया, आपको लगता है कि अगले 3-6 महीने में मार्केट यहाँ पहुंच जाएगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो इस तरह से मत कीजिए, थोड़ा सा अपना जो नजरिया है वो लंबा रखिए दोनों में ही, अगर आप स्टॉक या म्यूचुअल फंड में शिफ्ट करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट शुड बी गोल बेस्ड। अभी आपको गोल बेस्ड का ये है कि आपको एक आइडिया मिल जाता है कि कितने साल बाद आपको कितना पैसा बनाना है, कितना पैसा आपको चाहिए, और उसके लिए आप एक अच्छा कहते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाइए और उसमें एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखिए रिटर्न का। इससे रीजनेबल एक्सपेक्टेशन का क्या है कि अगर आप सोचते हो कि मेरा पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा, 4 साल में डबल हो जाएगा, तो डेट से होता है मार्केट के अंदर, बट आपको कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में ये जब आप अपना गोल बेस्ड कैलकुलेशन करते हैं गोल की अचीवमेंट के लिए, जब प्लानिंग करते हैं, तो आपको एक अगर ऑन एन एवरेज अगर मार्केट आपको 18% दे रहा है तो मैं तो कहता हूँ बी कंजर्वेटिव और आप 15% लेके चलिए अपनी प्लानिंग के अंदर। तो अगर आपको लंबे टाइम में 50% भी मिलता है तो आप उसी हिसाब से अपना सिप प्लान कीजिए, तो एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको पर मंथ कितना पैसा डालना चाहिए। तो ये जो मैंने पॉइंट बोले हैं, तो ये सबसे पहले इन सबको आप बैठ के डिसाइड कीजिए, फिर उसके बाद एक आपको राइट आंसर मिलेगा कि आपको जो सिप है वो कितना करना हो और कितना रिस्क लेना है। और अगर आप बिगिनर हैं और स्टॉक में सिप करना चाहते हैं तो सबसे पहले लार्ज कैप में ही रहिए, ब्लू चिप स्टॉक्स में रहिए, और जो सेक्टर उन सेक्टर को चूज कीजिए जो सेक्टर ज्यादातर सिक्लिकल नहीं है। तो आप 4-5 सेक्टर है उनमें आप एज ए बिगनर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फार्मा है, आईटी है, बैंकिंग है, एफएमसीजी है और ऑटो है। ठीक है, तो ये 5 सेक्टर है जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, और हर सेक्टर में आप सेक्टर लीडर को चूज कीजिए। जैसे आईटी है उसमें इन्फोसिस हो सकता है, उसमें विप्रो हो सकता है, टीसीएस हो सकता है, और ऑटो है उसमें मारुति है, महिंद्रा है, एस्कॉर्ट है। इसी तरह से आप फार्मा और बैंकिंग में जैसे आईसीसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, कोटक है, तो ऐसे आप ब्लू चिप कंपनीज को पिक कीजिए और हर सेक्टर में 2 या 3 टॉप कंपनीज को लीजिए जो लीडर है मार्केट की। तो जैसे अभी अविनाश जी भी जैसे बताते हैं, तो उसी तरह से आपको पहले एक कोर पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, और कोर पोर्टफोलियो जो है वो आपका मार्केट लीडर से आप बना सकते हैं। तो इसमें से आपके 10-12 कंपनीज ऐसी होंगी जो आपको ये जो मैंने सेक्टर बताए हैं 4-5 सेक्टर से अगर आप पिक करोगे तो आपकी ऐसी 12 से 15 कंपनियां बन जाएंगी जो आपका कोर पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगी, और इनमें आप मंथली सिप करते जाइए रिगार्डलेस ऑफ टाइमिंग द मार्केट। आप टाइम करने की मत कोशिश कीजिए कि इस स्टॉक को गिरेगा तो लूंगी, इसको ये बहुत बढ़ गया है इसकी हम सिप नहीं करेंगे, तो इस तरह से वो आप अपना मत कीजिए। तो कंटिन्यू सिप कीजिए मार्केट लीडर्स के अंदर। तो जब भी कोई सेक्टर देखिए सेक्टर रोटेशन चलती रहती है। अभी ये सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, जैसे आईटी परफॉर्म किया, ऑटो ने इतना नहीं किया, अब हो सकता है ऑटो परफॉर्म करे, आईटी थोड़ा सा ठंडा रहे। तो सेक्टर वाइज ये सब चलता रहता है, लेकिन आपको एज ए डिसिप्लिन इन्वेस्टर अपनी जो सिप है वो कंटिन्यू रखनी है। अगर आपका टाइम हॉराइजन 5 साल से या ज्यादा है तो 5 साल के अंदर हर सेक्टर अपना जो साइकिल है वो पूरा कर लेता है,
और हर सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है वो आनी शुरू हो जाती है। तो आपको ये जो शॉर्ट टर्म में 3 मंथ्स या क्वार्टरली ये देखने की जरूरत नहीं है इतनी। तो आपको एक रीजनेबल अच्छा रिटर्न जो है वो मिलता रहेगा, और जब तक आप ब्लू चिप स्टॉक्स में रहेंगे तो आपको इतना प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। और नेक्स्ट फिर है कि जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता है, जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता है, तो फिर आप अपने कोर पोर्टफोलियो के अराउंड थोड़े थोड़े मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक जो है उनको ऐड करना शुरू कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिसर्च और नॉलेज। क्योंकि जितना टाइम आप मार्केट के अंदर रहेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे, उतना ही आपका नॉलेज थोड़ा ग्रो होगा। तो आपको धीरे धीरे वही नॉलेज हेल्प करेगा। तो आप अपनी रिसर्च के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपना टोटल पोर्टफोलियो का 2% 3% फिर आप मिड या स्मॉल कैप स्टॉक में भी एलोकेट करना शुरू कर सकते हो, तो जिससे आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो जो बन सकता है। बस इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस और डिसिप्लिन में रहने की जरूरत है। तो डेफिनेटली इक्विटी में मार्केट में पैसा बनता है, और एज एन इन्वेस्टर अगर आप थोड़ा सा इसमें पेशेंस और डिसिप्लिन से करते हैं और थोड़ा सा स्टडी करते हैं, थोड़ा आपको पढ़ने की जरूरत है, तो इसमें आप बहुत पैसा बना सकते हैं इक्विटी में, और वेरी इजीली यू कैन बीट द इंडेक्स एंड मार्केट रिटर्न। Very well said. I think when you talked about, especially about sticking with the market leader, I always say, based on my cricket analogy, that you can't have medium pacers in your team and think they will give you results like the fast bowlers of the world. So I think it's better to stick with the Jasprit Bumrah or the Javagal Shrinaths of the world. So that's the key silver lining for that particularly. Thank you for sharing with that. So I think we do have couple of great speakers now. I'll just request the listener panel. So just do follow these awesome guys. I think they are sharing the knowledge with the community, and I think I'm loving the work they are doing. So highly appreciate if you guys would actually follow these guys. And of course, I think we can move to the question answers part. Sanchit, bhai, if you're there with us, you can just simply ask your particular questions for the day. Yes, I am here. I am here, Mani. Thank you so much. I think let me reset the room. I think we are running this room from the last 2 hours as well. And Mani, I think we have a session on Friday with Avinash sir as well, a very special guest session as well. So have you created out the link? If you have created out, why don't you ping it over here? I think जितने भी ऑडियंसेस है उनको भी एक आइडिया रहेगा जो हम एक रूम फ्राइडे में करने वाले हैं, ठीक है? तो इट्स मोस्टली ऑन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। दैट टॉपिक आई एम एडवांसली मैं बताना चाह रहा हूँ that about the seven keys of the market. ये वो very simple topic. So इसका बारे में हम आपको फ्राइडे को ही बताएंगे. But till the time, I think अविनाश सर के लिए भी थोड़ा सा सस्पेंस होना चाहिए. And Kuldeep sir, thank you so much for bringing out the entire summary of this room part today as well. Because we started out with Aditya, stock wizard part. We started out with Dhiren sir. Then we Avinash sir came out. Then Saurabh sir came out. And finally, the both two friends come together. It's like connecting together. Facebook भी आप लोग, Twitter भी आप लोग. बट आई थिंक जितने भी ऑडियंसेस हैं उसकी लर्निंग काफ़ी अच्छी रही विद रिस्पेक्ट टू एसआईपी। स्टॉक्स में भी होती है, म्यूचुअल फंड में भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन सबके रिस्क फैक्टर और पॉजिटिविटी प्रोज एंड कॉन्स सबके डिफरेंट अपनी तरफ से। So that is on their different part of mood as well. But yes, what matters is what we perceive out, how much risk we are capable of taking out. That is what we need to understand as well. So हमें कुछ चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए बोल के ना। I think अविनाश सर ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया। Even Saurabh sir had given us their life experience. Also, even the investor comes out who said, "Sir, मैं तो 5 लाख की म्यूचुअल फंड किया था, आज वो 38 लाख का होगा, विड्रॉ करो." So I think people have made money who are investing in long term. छोटा ही बनाया हो, जितना भी बनाया, they have made up money. So that clearly tells us if you do a systematic investment, if you are being disciplined with the investment part, अगर आपके पास patience है, आप disciplined हो, then you make the money. Whatever the market it is, but yes, the selection of the instrument also matters the most. किसी ने कहा रिलायंस ग्रोथ फंड अच्छा देता है, किसी ने कहा मैंने स्टॉक से कमाया, बिकॉज एवरीवन हैज अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ रिस्क। तो वो चीज बहुत मैटर करती है कि हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट को एंड वी आर रेडी टू टेक ऑन द रिस्क। आई थिंक दैट इज नॉट द होल समराइजेशन Sorry पार्ट। to interrupt. Sanchit, I just got a DM also. Your voice is breaking. So can you just check your network connection? Yes, money. Just a second. I think now my voice is audible. I think you are breaking in between. I don't know whether it's just for me. Can He's anyone hear breaking me up. He's better? breaking up. So I think Yeah, we can take some questions. I think there is option woman out here. Maybe she can start. And then, Okay. we So have I think certain it will be the requests. We last can take question some if I'll take requests. it out. Because I think Friday को we have to do a session ना, तो I think यहाँ पे 2 घंटे कर दिया, कल सबको सोना भी होगा यार। 11 बज गए, अपन 1 बजे तक रूम So नहीं I चला think we have सकते। this one woman. Let's listen to her. Then others we can take Yeah, on sure. Friday. Please. Yeah. Yes, So मैं Khushbu, you would free like to say something?
Yeah, thanks for giving a chance. The session is really going very well. I Yeah. have a question, and there are so many great speakers over here. So, if they can put some light on it. Actually, mutual funds and stocks both have their own grace and both move very well. If you have patience, then it gives good results. But my question is that people over here or investors over here have very less patience for stocks, and they have a very good appetite for mutual funds. And this is a problem what I have seen that with my friends and with so many people. So, is there a way out or something that we can do over here, or it is just a mentality glitch that we cannot take it ahead? Because people lack that kind of confidence in stocks that I have seen, and they are very good at keeping mutual fund for 10 years and 20 years, and they're happy with that average kind of return. If it is given average kind of return, then it is very good. They're not they don't bother actually. So if anyone could answer this question or put some light on it, then it would be great. I think it's a great question, Kushbu. And to give you a very quick one, I think it's more of a mindset issue because I think it's all about conditioning. तो आपको पहले से ही बताया जाता है कि mutual fund is a long term thing, but nobody tells you the same thing for stocks, you know. And it's like this, you know, like पुराने जमाने में, you know, जब like remote control नहीं होते थे टीवी में, and you had to go every time to change a channel, you have to go to the TV. दो तभी दो या तीन channel ही होते थे, but you had to go, get up from your seat, go change the channel, and again come back. And it was always very tedious. So you would rather than changing the channel, you'll end up watching whatever is coming. You know, you will not get up and change because you're too lazy to do it. So similarly, you know, mutual fund, because it is either offline, initially used to be offline, or they're in a different demat. You know, very few people do in the same demat as you know, your stockbrokers thing. So because you don't have the access to it on your phone, or everything you know, at times is not right there at your fingertips, you are too lazy to change it or try and time it. However, when it comes to stocks, everything is available at a tip of your palm. You know, it's everything is there on your phone. You can buy from your phone, you can sell from your phone, you can buy while you are moving in a bus or a train, or a, you know, nowadays even for that matter in a flight where Wi-Fi is available. So I think that makes it even more noisier, the way I would say it, you know, because every time there is a knee-jerk reaction or somebody does something in the world, the stock will react. Okay, and you will react even more than what the stock would react. Okay, so that is where, you know, people don't have patience when it comes to stocks. And whereas mutual fund, because you've been conditioned while you have started this 5 years, 10 years back, it's a long term thing. It will take care of your retirement, it will take care of your child's education or your marriage or whatever. You know, you are, it is somewhere embedded in your head that, you know, I don't have to look at it every day. So I think it's more of a mindset issue. And I think I'm happy it's mindset issue, because if people start treating mutual funds also like stocks, God only help them going forward. So yeah, at least something should make good money for them in long run. I don't know whether she's there or in the Hello. glitch. I think on the glitch she's gone out. Yes, I think she left out, sir. I think Vinod is also here, or one person is also here in the speaker. Yeah. Hello, Ash. Yeah, Vinodji. Yeah. Actually, see, I'm being putting money into mutual fund. Hi to all, first of all, and actually, it is very knowledgeable session that we are having it. I'm be actually long term investor, more into the mutual fund. My basic question is that when I compare my returns on the mutual fund, there are some mutual fund which gives me just 8%, 10%. Like, even though I have been investing in the SIP for more than 8 years or 9 years, and there are some mutual fund which has given even me 18% also. Now my question is that I just selected mutual fund. I am just adding up because I know that mutual funds is basically for long term. But my what I wanted to know, at what duration, as mutual fund is long term, at what duration I have to evaluate that
it is a time that this is not performing well or it is not giving me a right return, so I have to, you know, stop this particular mutual fund and change to some other mutual funds. Great, great question, Vinodji. So, my personal take, I can tell you, okay. And so, first of all, the when you select a fund, you should know certain things about the fund, okay, like who the manager, who the fund manager is. One, what is the AUM size it has? What is the structure of the fund? You know, whether it says a large cap, but it's investing into a lot of other like lot of other asset class, or it is strictly sticking to the rules of the large cap. That is another thing. And fourth and foremost is also to see what is the kind of expense ratio they are having, and where they stand in the along with them, who are the competitors in that same line. So if it's a multi-cap fund, who are the top three multi-cap funds? Does it feature among them or no? If no, why no? Because it's not that the best top rated multi-cap fund will always outperform. It doesn't work like that. So these are the basic things you see. Now, obviously, I still think that in 3 years, if it's not beaten the index which it is a part of, so say you've taken a mid cap fund, if your fund has not even beaten the mid cap index in 3 years, okay, then there is something seriously wrong. Then you probably it's underperforming. And if all the funds are underperforming, I won't mind it, because maybe the sector as a whole is underperforming. Like midcap was down in 2019-18, so to say. So alag baat hai. But when the others have performed and your fund hasn't performed, you really need to introspect why it has done that. And if you've spent enough time in it, at least like 3 years, and still it's underperformed, then there is a time to move to another boat. Nothing wrong with it, because end of the day, it's your money. If you won't work hard for it, nobody else is going to work hard for it. Okay, so I think 3 years is a decent time to see how, if it's see, obviously there will be certain level of underperformance between both the funds if they're in the same sector. So one may outperform the other one by 1% or something. But if there is a serious underperformance, in the sense one is at 18 and one is at 8, then I would really consider that something is wrong with the 8 guy. If both are in the same sectors, and especially when the markets have performed. So these are the basic things you look at, and then you move out. So like in my case, I had DSP, etc., which was not performing while other funds were performing within the same sector. So I jumped off. It's okay. And at least Okay. I'm happy I did that, because my other funds worked much more than what my previous fund was doing. So yeah, it makes sense. Okay, actually, it is actually very convincing answer I got. And actually, after researching more on this particular thing, it is out of this particular topic question. I don't know whether it is the right time, right platform to ask. I was even wondering of going for PMS also, because buying a stock at my level, because I've been working continuously, evaluating, checking, and working on that. I was thinking of going to PMS also, but again over there also people were telling that a lot of risk is also there in PMS. Still you go with mutual fund. Mutual fund is far better than PMS. So various inputs I used to get, so even never opted for PMS even after thinking for last 3-4 months, but never gone for it. So anyone can share on that, it will be great. It's all got its ups and downs. It's not wrong. If you have the money and if you qualify for the PMS, obviously there are times when PMS has beaten a mutual funds hands down. So I think it all depends on which PMS are you doing, one, and two, how well your timing, luck timing is also there. Because at times you have to, if you're at the right place at the right time, they have really done well. So I'll just give you a classic example. So when Kenneth Andre started his own PMS, initially, I'm talking 2017-18, I don't recollect, Oldbridge. And so the initial guys who went in, he had kept a ticket size which was more than the required ticket size, and the guys who had gone through us, so they had a dream run, because of pure timing and the market timing, so they had a dream run. So somebody who invested 1 CR, I think in a span of some time, they made more than, 1.8, 1.9 CR. And, in a, like they nearly doubled the money in a year's time. And they nearly freed their capital, So it's all about actually all luck on timing part also. Whereas mutual funds had not given that kind of return, So it's
but then that was one outlier year for him, for the kind of returns he gave. But it doesn't happen every time. Yeah, So because few of my friends have, I was talking and picking the input. They said that they invested in some Citibank PMS service, and after 3 years, it go, the return. They actually came into loss of close to 25-30%. That actually, then I thought it looks more riskier. Say at my age, taking risk appetite is also less for me. So I thought PMS looks to be more riskier than mutual fund. Then again yes, it thought is. mutual It fund looks is. to be better. It is riskier. So I don't know what your age is, but yeah, it is riskier if you, if you are I'm 50 from. now. Okay, okay. So yeah, we can, if you want, we can just connect offline if you want, and we can talk on it later. But Okay. okay, but yeah, that is what it is. Okay. So Money, I quickly, you think want to summarize? Can you repeat that? Something quickly you want to summarize? I yes, think, yes, 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 yes. yeah, Sanchit bhai. Shall I summarize it out? I think we have done this room for the last 2 hours in together. 9:15 start out किया. It's 11:20 already. So like 2 घंटे से we room चला रहे हैं. I think that's a wonderful thing. The kind of engagement and the people are listening in the audience as well. That is what the purpose of this room creation is. कि सबकी कोई ना कोई learning हो. And I would like to thank Aditya, the stock wizard guy. I would like to thank Tanvir sir. Even I would like to thank Avinash and his friend Saurabh sir as well, and the even Satish Mahajan. Lot of guest speakers have come up in today's session. हमने एक के साथ start out किया, but there are a lot of guest speakers have come out, and that is an interesting part of this room is कि हम लोगों का purpose जो था कि we need to make sure that every person understand the basic jargons of it in a very experienced manner कि हमारी stories क्या रहती थी, because whenever any person started out their investment journey now they face out every kind of challenges, whether in terms of selection of any mutual fund, selection of any stocks, or the way they have to start it off for their investment pattern also. I think that's what we today have answered out कि हमें SIP स्टॉक्स में करनी चाहिए या म्यूचुअल फंड में करनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए. I think that is what the purpose is about. But yes, guys, we are again coming up with a session on Friday. The topic is 7 hours of investing. It's a very interesting topic. What are the hours or what सात रुपए आप कह सकते हो? What I said. I'll be telling more on Friday itself. But yes, soon join in at Friday as well. And once again, thank you so much, uh, Avinash sir. Thank you so much, Dhiren sir. I think you guys are here. I cannot see the screen right now. पता नहीं ट्विटर ग्लिचेस थोड़ा करता है, but I think the purpose more clear out हो रहा है. अरे मेरा खुद का स्क्रीन खुल नहीं रहा है. But yeah, thank you guys. नहीं. But yeah, Thank thank you you guys. so much, guys. Thank you so much all for being here. Take care. And Be thank you safe. so much, Kuldeep sir. Every single person who is here, I hope Every single कि person. I किसी ना can't किसी open को the लर्निंग screen हुई and होगी. thank everyone. Yes, yes, that's true, that's true. Still, if किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है guys, तो do one thing, आप मनी को बैक में मैसेज कर दीजिए, आप मुझे कर दीजिए, किसी को कर दीजिए. विल श्योर मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा सेशन होगा फ्राइडे को, उसमें हम अविनाश सर से पूछ सकते हैं. आई थिंक उनका भी थोड़ा भी ग्लिचेस के चक्कर में वो भी लिसनर पैनल में है. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू कनेक्टिंग विथ हिम एज वेल राइट नाउ. बट या दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस. हैव अ ग्रेट डे. आई थिंक कल छुट्टी है, तो कल टुमारो इज लाइक ऑफ ऑल्सो. बट यस, मार्केट भी बंद है, बट इट्स अ नेशनल डे फॉर ऑल ऑफ अस. सो please celebrate on that part, guys, and have a good Take day, care. guys. Good night. Yeah. Take Thanks. care. Thanks. Thanks all. Bye.